So, good evening, friends. Welcome to An Academy. कैसे हो आप लोग? So, good evening to all, my dear friends. I'm your friend Aishwary. Used to teach you for GATE, ESE, and even for SSC JE. Okay. Yes, audio is clear. Video is also clear. Yes. Good evening, Raja. Okay. So start करते हैं. Yes. I'm expert in GATE and ESE, and I also used to teach for SSC JE. Friends, I have done my MTech from IIT Delhi, BTech from Jamia College, Delhi. 4 times I have qualified GATE with my best AIR 226. I do have 6+ years of teaching experience and 2 years of industrial experience, and these are the subjects which I basically takes on Unacademy YouTube channel as well as on Unacademy Plus, isn't it? And apart from that, guys, I want to tell you, if one of you or your friend is interested in an Academy Plus subscription, then he or she can always use this referral code. Okay, so they can use this referral code. Is it clear? Okay. Good evening, Priyanka. Okay, so let's start the session. So today is the part 2 of the revision session. So in yesterday's class, we have discussed about the indeterminacy. Okay, in yesterday's portion, we have discussed about the indeterminacy for, you can say, beams, frames, trusses, okay, and even we have taken one or two examples of arches. Okay, so these we have completed yesterday. So target today is big. So today we have to discuss, you can say, your kinematic indeterminacy and some portion of, you can say, stability. Okay, so these are the things which we have to discuss today. Very good evening, Vishakha. Okay, and guys, announcement is that tomorrow you all can appear for test, a live interactive test. It's live interactive test on on टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं एक बार. इंडिटर्मिनेसी, both static and kinematic, stability of structures, and some problems on FFD and BMD. FFD and BMD we have to start. Okay, so you have a test on these. Okay. Okay. So today's topics are much, but we will try to manage it in next 3 hours. Topics left are stability. In this, I'm going to take only half an hour. Stability of a structure. Next, we will see the kinematic indeterminacy. One of the easiest topic from structures, kinematic indeterminacy. And then we will start SFD and BMD.
Okay, then we will be starting our SFD and bending moment diagram. And friends, it's going to be 3 hour session. So if you are in a need of break or something like that, so you can always inform me whenever you are required to take so. So let me start the session with the stability of a structure. So in yesterday's class, we have seen what is static indeterminacy, what is external static indeterminacy, what is internal static indeterminacy, and all. Okay. So today is stability of structures. So guys, listen to me now. In yesterday's session, we have seen that what are DS, DSE, and DSI. DSI is internal static indeterminacy, DSE is external static indeterminacy, and DS is overall static indeterminacy. A very good evening, Siddhant Yadav. Okay, see, if this value is greater than, there can be three possibilities. This ds can be equal to 0, this ds can be equal to greater than 0, or this ds can be equal to less than 0. Okay, it can be less than 0. Okay. Okay, so similarly means you can say 0 positive value and it is negative, it is negative, it is positive. Same can happen with all these three things. So this can also be, you can say, negative, 0, and positive. This can also be negative, 0, and positive. Okay. I'm going to give you a general rule, but that need to be applied only with some visual inspection. So you have to give top priority to the visual inspection. After that, only you have to come on these numerical values. Okay. For example, let me tell you the generalized thing that if ds is 0, if ds is 0 guys, then what does it mean? If ds is 0, then what does it mean? If ds is 0, it means that structure is overall determinate as well as stable. So ds is the main thing, it is the overall thing. So it means that structure is overall stable as well as determinate. But it may fall lie sometimes. I will tell you the cases. And if ds is equal to 0, it means that structure is externally determinate as well as externally stable. And similarly, if dsi is equal to 0, then internally your structure is stable as well as internally your structure is determinate. Okay. And if this value is negative, you can say that structure is your unstable. And if ds is negative, then you can say externally structure is unstable. If dsi is negative, then you can say internally structure is unstable. Similarly, if ds is greater than 0, you can say overall the structure is you can say stable as well as indeterminate, as well as it is indeterminate. Similarly, if ds is 0, you can say externally structure is stable as well as externally it is indeterminate. And dsi, if it is greater than 0, then you can say internally structure is indeterminate as well as stable. Okay, so for construction point of view guys, we prefer indeterminate structures because they are more good, or you can say better in the serviceability criteria, because the effect due to external load is less in the form of deflection, reactions, and all, isn't it? So such is the case here. Okay, yes, good. Now see, uh, what about stability? So just like your static indeterminacy can be divided into two portions, DSE and DSI. Similarly, we can also divide our stability into two things. One is internal stability and another is external stability. So when it comes to stability,
So it is going to have two parts. One is external stability and another is internal. External as well as internal. And here it is, you can say it is overall stability. Here it is overall stability. It is external stability and it is internal stability. Like as you can say here that if your structure has to be overall stable, if your structure has to be overall stable, then it must be, or you can say it should be externally stable as well as internally stable. Means you can say that if your structure is externally and internally stable in both of these means, then overall your structure is going to be 100% stable. But if your structure is externally unstable but internally it is stable, then overall 100% I'm sure structure is going to be unstable. But yes, if structure is externally stable but internally it is not, then the resultant overall stability can be any. The resultant overall stability can be there or cannot be there. But one thing is sure, if external stability is missing, then overall stability cannot be achieved. Just imagine, suppose you are having a building where external reactions are less, or you can say external support system is not stable. Then doesn't matter how strong you constructed your beams or column, then as long as your foundation is not proper, so overall you are going to call that structure as unstable. So that is the concept there. Isn't it? Okay. So similarly, you can say that for overall stability, the one thing which I need here is external stability. So if I have to choose one between internal and external, then I can say that for overall stability, external stability is must, isn't it? Similarly, guys, you can see here, whenever it comes to stability on the means of indeterminacy, so not only on the value of ds, you will not be able to tell that whether your structure is stable or not, because sometimes what happen, overall ds is positive, okay, because due to internal indeterminacy, but externally it is negative. So suppose it is -2, suppose it is +5, then overall numerical value, just by inspecting numerical value, you will see that ds is equal to 3, because ds is equal to dse plus dsi. So you can say that by watching 3, you may conclude that overall structure is stable, but that is not true, because overall stability can only be achieved if externally your structure is stable. So this is not true. But yes, vice versa might have been true. Like suppose it, if it would have been +5 and -2, still the final ds is 3, but in this case your structure can be stable, isn't it? Is it clear to all? Tell me, guys, is it clear to all? Please let me know if you have any doubt till here. Please let me know, all of you, if you have any doubt here. So shall I proceed? Okay, okay, great. So whatever I have just said, I am writing here: external stable, internal stable. Then I must add a line here. You can say, overall. If you can say externally it is unstable, but internally it is stable, then 100% overall it's going to be unstable. But if a structure is internally stable, externally stable, but internally it is not, then the consequences can be any. It can be stable overall or it cannot be stable, depending upon the condition. Is it clear? Good evening, Kavya. Okay. So this is the thing which I want to tell you.
So now let me start with the external stability. So what is happening in external stability? Just see. That for external stability, tell me guys, how many reactions do I need? For external stability, structure needs 2D structure की बात हो रही है. Structure needs at least how many reactions? Tell me guys. At least how many reactions? Please reply all of you. How many reactions do I actually need? Govind is saying 3, Shashank is saying 3, Vishakha is saying 3. Okay, good. Okay, 3 reactions. But my dear friend, no doubt for external stability, 3 reactions are mandatory, but it is not the only condition. It is not the only condition. See why? It is right. At least you will be needing 3 reactions for stability of 2D structure, or you can say planar structure. Similarly, if it would have been a case of, you can say, uh, space structure or 3D structure, then for that we will be needing at least 6 number of reactions, isn't it? We will be needing at least 6 number of reactions. So Barbinat and Mohak, they are also right. Okay, Soumya is also right. Great, good. So 3 number of reactions. But guys, what if all these 3 reactions are parallel? What if all the 3 reactions are parallel? Suppose this is my beam, and in this beam you can say that I am having here the 3 number of external reaction, 1, 2 and 3. But tell me, is it stable or not? Is the structure stable and or not? Yes, very good, Kavya. Yes, no doubt we will be needing 3 reactions, but those should not be parallel. Okay. Similarly, what will happen if reactions are, you can say, congruent? Okay, still your structure will not be stable. Just see this. Okay, so here you can see this is a curved beam which are having roller. मान लो कोई roller coaster चल रहा है यहाँ पे, and if you are going to see the direction of reactions, so they are meeting at a point, and this point is known as concurrent point. It is known as concurrent point. Here as well, guys, you can observe that the reactions are 3 only, but still this structure is not stable. Why? Because all 3 reactions are congruent. So due to this, if you are going to apply any force here,
then it may tend this structure to rotate about this congruent point. So what I want to tell you guys, just listen here. No doubt for external stability, I will be needing 3 number of external reaction in case of 2D structure, but these 3 reactions should not be parallel, as well as these 3 reactions should not be congruent. If reactions are parallel, then linear instability will occur in the direction perpendicular to the reaction, and if reactions are congruent, then rotational instability may occur about the congruent point. So this is what I want to say. Okay. Barbina Talutkar is saying, sorry if I am pronouncing your name wrong. Barbina, I think. Sir, your explanation are very simple and easy to understand. So kindly give a live session on previous year GATE questions. Barbina, I am not sure about live session, but I am going to solve previous year GATE questions as well as ESE question, and you may find them soon on our channel. Okay, so every person in our team. Okay, yes, Anku, it should not be congruent as well. Kavya is saying. So every member in our team is working on that. So soon they will be available for you guys. Okay, so we are providing free solutions, you can say, for previous year GATE and ESC. Thanks, Barbina, for the compliment. Yes, Kavya is right that it should not be congruent as well. Yes, Shashank, we can say we need minimum 3 non-parallel and non-congruent reaction for structure to be stable. But Shashank, it is only valid in case of two-dimensional structure. Yes, Verbena on YouTube. In case of two-dimensional structure. Is it clear? For three-dimensional structure, you will be needing 6 number of reaction, but those 6 reactions should not be parallel, should not be congruent, as well as they should not be coplanar. Okay, for two-dimensional structure, 2 conditions are there for external stability, and for three-dimensional structure, there are 3 conditions for the external stability. Is it clear to you? Is it clear? Okay, great. So for external stability, what I have learned, I am needing 3 number of external reaction, and those should be non-parallel and non-congruent. Similarly, I am writing here, although we are not discussing 3D cases. Similarly, I have taken certain examples on my full YouTube sessions. You can watch that. And guys, once again, I want to tell you, my main task here today is to take you to that level from where you will be able to solve problem by your own, or you can watch my other video for more detailed questions. Okay. So similarly for 3D structure, 6 numbers of reactions, 6 numbers of reactions are needed such that they shouldn't be coplanar, parallel and concurrent. Okay, so this is the criteria. Okay, so great. So let's proceed further. It is all about the external stability. Now let me see the things for internal stability. For internal stability, if I'm talking about beams, so or you can say frames, then there should not be any internal discontinuity. There should not be any internal
discontinuity. Okay, like in the form of internal hinge, internal roller, okay, internal roller in vertical direction, or you can say internal roller hinge. So such discontinuities must not be present in beams and frames in order to say that for internal stability. And apart from that, means you can say that your beam should be in single piece. Your beam should be in single piece. So there should be no condition of formation of mechanism. Okay. Yes, it also depends upon DSI Vishaka. Shashank, at external level, they are not going to affect. Yes, Aman, hello, good evening. Okay, so basically, you can say it in terms of beams only. Okay, so for frames, guys, we have to check even for DSE. So let's make it only for beam. Okay, and there should be no condition of formation of mechanism. Okay, so this is a way by which we can check the internal stability. And what is mechanism? Whenever there will be three collinear working hinges. It is also a special case of internal discontinuity with internal hinge. Okay. Yes, Manish. See, suppose I am having a beam here. Um, See, Manish, mechanism is just a rigid body deformation. Just a rigid body deformation. The very basic concept to distinguish whether the structure is stable or not, just check that whether your members are going to displace rigidly or they are going to displace elastically. As long as they are displacing elastically and their deformations are not appreciable, so you can say that your structure is stable. But whenever your structure, beam or frame are going to show rigid body behavior, at that particular point of time, guys, you can say your structure is unstable. So like this, suppose there is an internal hinge. Okay, so this is hinge, and here there is also hinge. So now if you are going to place any load here, then see, this member and this member are going to, you can say, translate, or they will be able to rotate without any taking any strain, so they are perfectly straight. Okay, suppose if this hinge would not have been there, in that case the deformation would have been like this. In that case, the deformation would have been like this. So this is elastic. So on the removal of load, it will come back to its original position. And on the removal of this load, it will not come back to its original position. So there is one more, you can say identification of rigid body displacement. Generally they do not come back to its original position after the removal of load. Yes, if one part is rotating, or you can say displacing elastically, and another rigidly, so in that case it may come back to its original position. Okay, for example, like this, see here, if it would have been like this,
Now if you are going to place some load here, then it may deflect like this, and this part you can say is rigidly straight. But whenever you will remove load, so you can say this segment is a parent beam and it is, you can say, child beam. So after the removal of load, it will come back to its original position. Okay, so here this fixity of support is not able to create, is not supporting to this beam to create a mechanism, isn't it? Suppose अगर यहाँ पे hinge होता, like in this case, so if it would have been hinge, तो क्या होता ये again it would have shown rigid body deformation. So this is mechanism. This is mechanism. This rigid body displacement is mechanism. Is it clear? Is it clear to all? Tell me, Manish, is it clear? Okay. Okay. So please comment. And now I'm moving for the, so this case will be internally stable or not. This case is not internally stable, my dear friend. This is neither internally stable nor overall stable. You can say that this case as well as this case, I am commenting about their stabilities. See here. Okay. So this is my case number A. This is my case number B. This is my case number C. So case number A is mechanism. Why it is mechanism? That due to the presence of this internal hinge, the entire you can say members are going to displace rigidly. Okay. So whenever you are applying any load here, so it will displace rigidly. It is not going to come back to its original position, है ना? B जो है वो आपका स्टेबल है. B में अगर आप लोड लगाते हो, then elastic deformations are there, and on the removal of load, it can again come back to its original position. And here you can find a beam in a single piece. You can say no internal discontinuity is there. So this simply supported beam is externally stable because here you are having three reactions. It is internally stable because you can find this member in a single piece, no internal discontinuity. But you can say it is overall also it is stable, because if a structure is internally stable as well as it is externally stable, then no force in this world can stop it to make overall stable. Is it clear? Yes. Vishaka, now come to C. This question number C. Who is asking? Barbina. Please listen here. Actually, this all is happening due to the increase in speed. Otherwise, I am not that fast in my routine classes. Now see, this is case number 3. So what was the case? Okay. And this is hinge. Just a minute. Okay, just see. This is a beam A, C, B. Beam number 3. Okay. So listen here. Here you can say internally
it is having, it is E, it is, you can say, I, and it is O. E stands for external, I stands for internal, and O stands for overall. Okay. So listen, externally, how many reactions are needed? Only 3. But how many are present here? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 reactions are there, but for stability, guys, you need only 3. And these 5 are also not parallel or concurrent like that. So externally, I can say it is stable. And only 3 were needed, and but here I am having 2 more than the required. So I can say it is stable. In fact, it is overstable by 2 degree. If we are talking about internal, so internally it is unstable. Internally it is unstable. Okay, why it is unstable? Because in this beam one discontinuity is there in the form of internal hinge. When you add external as well as internal, then overall summation you are going to get +1. So this +1 is showing you that this thing is going to be stable. If it would have been negative value, then overall your structure would be unstable. Okay, so internally I will say that this beam is unstable. Externally I will say that this beam is overstable, and overall it is stable. In fact, this external overstability is actually compensating the internal instability. So if you have to comment on its stability, then you are going to say that this structure is 100% stable. This is 100% stable. So no one is going to put any question on its stability. So it is 100% stable. But if you want to bifurcate them further, then this is the further bifurcation on the external as well as on the internal level. Okay. Is it okay, Barvina? Tell me. Is it okay? Tell me. Okay. So please comment. In the meantime, I am shifting to the next. So next, let me talk about the trusses. Sir, suppose both side hinges and no internal hinges, then it will be unstable. Both side hinge and no internal hinge. Are you talking about simply supported case? Both side hinge. Like this. Okay. And there is a load. Just see, you can identify by your own. Just see here. Just see here. The total number of reactions here are 3. The total number of reactions here are, you can say, 3. 1, 2, 3. And for external stability, guys, you are needing only 3 reactions, and here you can find that these 3 reactions are not parallel. So you can say that it is just stable because 3 needed and 3 are there. Okay, it is just stable. Internally, what you need? You need your beam member in a single piece. That is no internal discontinuity is there. Suppose, my dear friend, suppose if external reaction would not have been there, then what is the behavior of this beam? If this beam you can find in single piece, and even if you are going to bend it like that, it is going to bend elastically. Okay, but this case, if you remove these external supports, and now if you want to rotate it, then they can move rigidly. So therefore this case is also stable. This case is also stable internally, because even on after the removal of this reaction, and if you are going to apply any force here, then your beam is going to deform elastically.
And overall, if it is externally stable and it is internally stable, then nobody can stop it to make it overall stable. And the very good example of this is in your strength of material. You guys are keep practicing on problem on simply supported beam. So being a civil engineer, guys, you can never solve unstable structure, or you don't want to solve unstable structure, because unstable structures are going to have acceleration, angular accelerations and all, because they are not able to stabilize the external forces with the reactions. Okay, is it clear? Just hinge, no roller. What about this? Like this, it is also stable. Overall, it is stable. In fact, it is even indeterminate of degree 1. It is also stable. Okay, two hinges are there. It is just like that. You take two bricks. You take two bricks like this. So this is your brick number 1. And this is your brick number 2. And you are going to put some, you can say, let's say wooden plank here. Some wooden plank here you can put. Okay, so like that, some wooden plank you can put here. So now this brick are going to act as hinge, because whenever you are applying load on the wooden plank, whenever you are going to apply load on the wooden plank, so ends of that are able to rotate freely. No constraint is actually there. No constraint is actually there. Is it okay? Okay. And Barvina, it's a suggestion for you. Please refer to my video number 2 and 3. Okay, which is casted on dated 16 July and 17th of July. Okay, to have a more clear view on this, okay, to have a more problems, just have a look on those videos. Is it clear? Okay. So now let me come over the trusses. So you can say that for trusses, the rule for external stability is same. So DSI, if it is greater than equal to 0, you will say it is stable. Or you can say if number of external reactions are greater than equal to 3, then it is externally stable. Okay. For internal stability, this one is interesting. For internal stability, guys, you will be needing, you have to check whether the number of members are greater than equal to 2j minus 3. So if number of members are equal to 2j minus 3, so it is internally stable. If number of members are less than 2j minus 3, then it is internally unstable. And if number of members are greater than 2j minus 3, then it is internally overstable. Okay, or you can call that this truss is perfect truss, this truss is a deficient truss, and this truss is indeterminate truss internally. Okay, overstable truss. Is it okay?
Okay, so number of members should be greater than or equal to 2j minus 3. For the internal stability, you can say that it is stable when m is equal to 2j minus 3, and it is also stable when m is greater than 2j minus 3. But condition apply. One condition is apply. That condition is it must pass in the visual inspection. And what are the criteria of visual inspection? Just let me explain that. See, my dear friends, suppose I am having a truss here. I am having a truss here which is having you can say 6 joints. So if it is going to have 6 joints, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then tell me how many member it must have. So it must have 2j minus 3. So 2 into 6 minus 3. I hope you all know from where this 2j minus 3 has come. So it should have 9 number of members. It should have 9 number of members. Is it okay? Now, how many members are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So for stability, guys, you will be needing at least 2 more members. You will be needing at least 2 more members. Let's say like this, as well as like this. Okay. So you can say that this you can say internal truss, where each and every joint is to be hinge connected, is internally it is stable. Why it is stable? Because it is having the sufficient number of members. Okay, but having sufficient number of members is not the sole criteria to decide whether this truss is internally stable and not or not. No doubt for internal stability, it will be needing 9 number of reactions, but there should be 9 number of forces members, but those 9 forces, those 9 members must be distributed evenly. Suppose again if I have to draw this, and again there are you can say 6 number of joints, and again if there is 6 number of joints, and this time what you have decided, you have checked that the minimum number of member must be equal to 9, and this time you are going to provide these 2 additional member on this side. Then still for 6 number of joints you have provided 9 numbers of member, but these 9 members is not going to make this truss as internally stable, because no doubt the minimum number of member criteria is satisfied, but due to the non-even distribution, you can say it is unstable. Suppose if instead of this location, this member would have been at this location, then you could have said like this, this truss is internally stable. So thing is like that. Okay. So in case of trusses, my dear friends, the minimum number of member criteria must be satisfied, and apart from that, you also have to check whether your members are evenly arranged or not. See, my dear friends, the basic geometry of truss is triangle. So if you are seeing here that one triangle is missing, so you can think that yeah, something is going to happen here, something is missing really here. Okay, so such a category will be called as unstable category. So you will not be able to analyze such structure properly, because they are going to have rigid body deformation on one side, which is huge in quantity. Okay, so it's going to be like that. It's going to be like that. So any doubt, guys, please let me know. Yes, Vishaka is right. So she is my regular follower. So she used to watch my old lectures, I guess. Thanks. Okay.
Okay, so let me take a numerical on that. Let me take a numerical on that. So here also that rule is valid. If it is internally stable, but externally if it is overstable, and if the external you can say overstability can compensate the internal instability, in that case guys you may call your structure as internally as well as overall stable. So let me take an example on that. Thanks a lot, Vishaka. Just to demonstrate this, what can I do? I can take two numericals which may look identical. Okay, which may look identical. Okay. Manish, I think you have not attended the yesterday's lecture. Manish, please watch my yesterday's lecture. There I have taken a question on that in the last segment. In the last segment, my dear friend. Okay. And even I told that I also committed same mistake few days back, and I have taken two questions back to back on that concept. Okay, that was regarding indeterminacy. Okay, Manish. So see, this time, Manish, how you missed my lecture? So this is a truss. Okay, let me take both. So guys, you have to tell me about the internal, external, and overall stability. Internal, external, and overall stability. Here as well as. Okay, so these are the two questions for you. Mm. Okay, Manish, not an issue. And Bharvina, what you can do, you can use this email ID. Okay, you can use this email ID. I'm writing it here. It is Jamia IITD @
gmail.com. Okay, all are in small letters. All are in small letters. JAMIAIITD@gmail.com. You can send your doubts there. I will solve it for you. But yes, I will take 2-3 days at least. Okay, I will take at least 2 to 3 days, because from tomorrow onwards I am going to relax a little bit. So till now the schedule is very hectic. Today also the schedule is very hectic. Vishakha is saying USS. Okay. What about others? What about others? This is question number 1, this is question number 2, and this is question number 3. Take a screenshot of this.
So most of you are right. So internally unstable by one amount. Okay. So externally stable. You can see here joints are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So for 11 joints, M required will be how many? Required will be 22 minus 3, 19. But here if you are counting them, they are coming out to be 18. Okay. Similarly here M is 18. So J is 11 and M is 19. So this is also internally unstable by one unit, and this is also internally unstable by one member. Both are unstable by one member. Okay. Now let me talk about its external stability. This is stable because here you are having total 3 number of reactions. 1, 2, 3. So externally it is stable, or you can say just stable. It is also externally stable, but here you are having total 4 number of reactions. So it is stable over stable by one amount. See what is happening here. Internally it was unstable and externally it is just stable. So अगर ये खुद ही just stable है तो ये internal unstability को counter कैसे करेगा? So that is why here you can see -1 and 0 is -1 and it is unstable. You can see if you are going to apply any load here or anywhere, then this will be showing mechanism. It will be going towards the right hand side. It will be going to show you the rigid body motion. Okay, but here this plus external one, external indeterminacy, external reaction is actually compensating the need of internal deficiency. Here it would have been stable if one force would have been in this direction, but this direction member deficiency is being completed by this horizontal reaction. So that's why overall it is stable here. So like that, external stability sometimes can compensate the internal instability. Is it okay? So USU, USS. So USU and USS, and Vishakha is right, Soumya is right. Okay. For question number 2, Vishakha and Soumya are the first one to answer. Sorry, Shashank is the first one to answer. Okay. So now let's see. You can see that internal, it is going to be how many members? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 joints. And for 8 joints, the number of members required will be 16 minus 3, 13. But here if you count them, then it is coming out to be 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So it is stable. It is stable by plus one arrangement, plus one member. Externally it is, you can say, unstable. Why it is unstable? Yes, externally it is stable because no doubt the number of reactions here are 3 and you are providing them here. But these 3 reactions are parallel, so this truss will not be able to, you can say, retaliate any horizontal component of reaction or horizontal reaction, because due to the inclined or horizontal loading, this truss can move as a rigid body. This truss can move as a vehicle, isn't it? So it will be unstable here. And overall, I told you already that if the structure is externally unstable, then overall no one can make it stable. So it is also going to be unstable. See, even this value is greater than 0, still your overall structure is unstable. Yes, due to the parallel reaction. You can say due to the parallel reaction. Great. So I hope no doubt is here to anyone.
So guys, uh, next I'm going to start. Next I'm going to start kinematic indeterminacy. Kinematic indeterminacy. One of the easiest topic in structural analysis. Okay, so within next you can say 40 to 45 minutes, you will be champion in kinematic indeterminacy. Okay, the all you should know that what is the degree of freedom and how many degree of freedom does each of your joints as well as support is having. Okay, so I'm going to explain it now, but still you are finding any difficulty, then you can refer to my lecture 1. Lecture 1 is just an introductory session of 15th July, but still it is useful for those whose basics are not clear. Yes, Shashank, in you can say in second question, the stability is there and it is +1. Yes, it is +1 because one member is more than the required. So you are having here 14 members and actually only 13 were required. So it is internally indeterminate of degree 1. Okay. So whatever I am writing here, it is in journal. Suppose if somebody can ask me, sir, if I am going to apply only vertical load on this truss, then in that case this is also stable. Then in that case this truss is also stable. But for inclined or horizontal loading, for journal loading, this truss is unstable. Second, no, my dear friend, second it is unstable. Second it is unstable by one amount. Okay, it is 0. Yes, it is 0. This will be equal to 0. Good. This is equal to 0. -1 plus 1 is 0. Okay. Good, Shashank. And Shubham, my dear friend, actually I do not share my number. But whatever queries you are having, Shubham, you can write it to me at this email ID. Okay. You can write it to this email ID. Let me even write you at the comment box. Okay. You can ask your queries here. Okay, let me proceed further, my dear friends. Yes, kinematic indeterminacy. I need your half an hour concentration, and I'm sure no questions of kinematic indeterminacy is going to is going to become problem for you in future. So just listen. So kinematic indeterminacy, it represents the decay. So guys, in structural analysis, we are having two approaches to solve indeterminate structure. One on the basis of force and another on the basis of degree of freedom, or you can say displacement. The necessity of static indeterminacy is that if we want to solve our structure by a force method, so that we can check that how many additional equations, or you can say compatibility equations, you needed for solving the structure by this force method. Similarly, if somebody wants to use you can say displacement method in order to solve the indeterminate structure, or you can say kinematically indeterminate structure, then this kinematic indeterminacy is going to tell you that how many additional joint equilibrium equation do one actually need to solve the structure, or to analyze the structure by the displacement method.
What are displacement methods? Displacement methods are those which you have studied in your college in the form of moment distribution method, Carney's method, slope deflection method, stiffness method. Okay, and the use of static indeterminacy lies in the force method, in which you are going to study strain energy method, unit load method, method of consistent deformation, three movement equation, column analogy method, like that. Is it clear? Barbina is asking, sir, whole syllabus of structure will be completed from tomorrow's live classes. Are you talking about particular today's session or in general? See, let me reply this in general. So topic for tomorrow's session is indeterminacy, stability, kinematic indeterminacy, as well as SFD and BMD. Okay, so I will give you the sufficient concept of SFD and BMD in today's session only, and just to practice more and more, you can refer to my earlier lectures. Okay, and doesn't matter if your preparation is full or not, it's my advice, please be appear for the test. Okay, then because the nature of test is going to be interactive, I will give a question to you. I will give a time to you guys to solve that particular question, and at the last of the session, in the last half an hour of the session, I am going to discuss each problem which I am going to put in the tomorrow session. So it is not only the test, it is also the discussion on test. Okay, so it's advised that if even your preparation is not up to the mark, still you can come tomorrow's you can come there for tomorrow's session. Okay, and general live class, I am going to cover each and entire thing which will be necessary for your GATE and ESE exam, so don't worry. So test timing is 11 to 12:30. 11 to 12:30, I guess, most probably. Yes, it is the test timing. Yes, it is on Unacademy app, and it will also be streamlined on YouTube. It will also be streamed live on YouTube. But if you want to really participate in the test, then it's my advice that come on to Unacademy's app, and it is free of cost, doesn't matter. But if you just want to view the, you can say, lecture just as a spectator, then you can even watch that session on YouTube, so not an issue. So guys, now let me proceed further because syllabus is too much. So just write this DK, or you can say kinematic indeterminacy. It refers to the independent degrees of freedom available at joints. It refers to the independent degree of freedom available at joints. Okay, so what are the various types of joint? And their degree of freedom. So here at max you can have 2D rigid joint. Yes, Shashank, we need 18 and we have 19. So which question you are talking about?
No, we need 19 and we are having 18, my dear friend. Why you are saying like that? See, 1, 2, 3, 4, 5, 5 to the 10, 11. Okay, so J is 11 here. So M is how much? M should be equal to 2J minus 3. So 2 into 11 minus 3 is 22 minus 3, 19. So we are needing 19. But if you are going to count them, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 to the 18. So we are having 18. Is it clear, Shashank? We are having 18, but requires are 19. You can see now that one member is missing here. So you might be needing one more. It's that's why it is -1. Is it clear? Yes, so reactions are 4. So that's why on external I am going to add 1. Shashank, please listen, all of you please listen to me. From the 2j minus 3, you are getting that particular number which must be there, in order to say that structure is internally stable, है ना. दो चीजें होती है, एक होता है कि कितना होना चाहिए और दूसरा कितना है. होना चाहिए था 19, क्योंकि 11 जॉइंट अगर मेरे पास है तो 11 जॉइंट के हिसाब से अगर मैं ट्रायंगुलेशन लॉ लगाऊं तो मुझे कम से कम 19 क्या कहते हैं 19 मेंबर चाहिए. बट मेरे पास एक्चुअली में है कितने 18. तो एक मेंबर मुझे और चाहिए था और वो तो मुझे क्लियरली दिख भी रहा है यार कि वो मेंबर ये होना चाहिए था या ये होना चाहिए था. इन दोनों में से कोई एक मेंबर मेरे पास होना चाहिए था. तो जो रिक्वायरमेंट है और जो अवेलेबिलिटी है वो आपस में मीट कर जाती. इज इट क्लियर? My dear friend Shashank, 2j minus r is not your DSI. It is 2j minus r is your DK. It's kinematic indeterminacy, my dear friend. It is kinematic indeterminacy, not static. So that we are going to discuss now, my dear friend, 2j minus r. Okay. It's 2j minus 3. Just listen here, each of you, my dear friends. Just listen to me here. See, suppose if I am having 3 joints here. First joint, second joint, third joint. Now how many members do I actually need? 1, 2 and 3. You can see 1, 2 and 3. So if you are providing 3 members for 3 number of joints, so here joints are 3, and if you are providing the 3 number of members, so you can say it is stable, because doesn't matter if you are going to apply load from here, from here, from here, from here or from here, so it is not going to lose its geometry. It is not going to show any rigid body deformation. Okay. Shashank, if it is clear, then let me know. I want to hear it from you. Okay. You were using 2j minus r instead of 2j minus 3. So don't worry. You were missing 2j minus r. So we will see it now. Don't worry. Now come to the kinematic indeterminacy. So kinematic indeterminacy refers to the independent degree of freedom which is actually available at the joint. So for two-dimensional rigid joint, the degree of freedom will be 3. The degree of freedom will be 3. What are those? It can be delta x, it can be delta y, or it can be theta z. Okay. Now, if you are talking about three-dimensional rigid joint, then
it is having all 6 possible degree of freedom, 3 translations and 3 rotations, delta x, delta y, delta z, theta x, theta y, theta z. If you are going to have here 2D truss joint, 2D truss joint, then in truss you are going to have only 2 degree of freedom, delta x and delta y. And if you are having here 3D truss joint, okay, so here we are having all 6, no sorry, not 6, 3 degree of freedom, delta x, delta y and delta z. Guys, in trusses we are not going to incorporate theta. I am not saying that theta cannot develop in truss. Theta can develop in the truss, but in the definition of a degree of freedom or kinematic indeterminacy, we have used the word independent. Independent means which cannot, which is basic, which is fundamental. And the theta, which is actually used in trusses, they can be obtained from these linear deformations. For example, if I am having a truss like this, if I am having a truss like this, and let's say these are the supports over here, and these are the supports over here, and even on the application of this load, what is happening? So this can show some deformation like this. Like this. So you can see that from here to here, some delta x is there, some delta y is there, and even you can find that some theta is also there. Some theta is also there. But the reason I am not going to write theta z here as an independent, because this theta z value can be achieved. I know this theta z is this delta y over this length. So whatever thing I can achieve from the basic thing, so I am not going to write them. So these are not independent for me. So these thetas induced in the trusses can be obtained on the basis of linear degree of freedoms. So that is the reason why I am not going to incorporate rotation portion in the trusses. So therefore for 2D trusses they are 2 and for 3D trusses they are 3. Is it okay? Is it okay, my dear friends? Okay. So this is the concept. So now let me come over a two-dimension structure. Let's say I am taking, this is my R&D question. So each and every concept of decay I used to explain from this diagram. So guys, just let me know how many degree of freedom do I actually have here. How many degree of freedom do I actually have here? Please let me know this. So now we are discussing the kinematic indeterminacy. Okay, so time is 7:25. We will try to complete it by, you can say, in next 20-25 minutes. Okay, so please fast, be fast. Okay. So tell me the total possible degree of freedom. So here you can say that no deformation, no degree of freedom will be there at A, because all the joints are fixed. Joints are fixed. But this joint can actually have 2 degree of freedom. One in rotation and another one is translation. So you are having 2 degree of freedom. So total you can say that here your dk is going to be equal to 2.
your dk is going to be equal to 2. Yes, very good. Okay, but in reality, in formula, some of you might have studied that it is 3j minus r. So what they are doing actually, they are simply first of all, they are you can say breaking the internal member. So if it would have been without support, then you could have said that it is going to have all three possible degree of freedom, and it is also going to have all three possible degree of freedom. But now, due to the interference of the external support here, which is fixed and which is you can say hinged, so like that, it will be having three reactions. So what are those three reactions? 1, 2 and 3. It is having one reaction. So guys, whenever I will have reaction, I will block the degree of freedom. So due to this reaction, you can say degree of freedom in the vertical direction is blocked. Due to this horizontal reaction, the degree of freedom in the axial direction is blocked. And due to this movement, the degree of freedom in the rotation is also blocked. Is it clear? So guys, here you can say that this kinematic indeterminacy or the number of joint displacement will be reduced by 3. And here you can say the degree of you can say kinematic displacement is going to decrease by 1. So ultimately the total reduction is 3 and 1 it is 4. And this 4 is nothing but simply the number of external reaction. So total here number of reactions are 3. Total here the number of reaction is 1. So total if you are going to add them, then it is 3 plus 1 4. And 4 is also the number of external reaction in this particular case. So that is why while writing the formula for dk, I can always write, my dear friend, it is going to be equal to, this is first joint, this is second joint, so it is 3 into j. It is the all possible degree of freedom minus you can say r, where r is the number of external reaction. See my dear friend, Pawan, you are writing about this problem, my dear friend. Which problem you are going to tell me? No. Rotation is not independent here. If you are going to draw its deflected pattern, then it will be like that. Here the elastic curvature will be there. But whenever it comes to the trusses, so elastic curvature cannot develop because each and every time the load is going to act on a joint. And each and every joint is hinge connected. So that's why it is always going to deform as a rigid body. Okay, in the rotation, not as the elastic body. Only the elastic deformation will be there in the axial direction. So due to the absence of shear and bending moment, they are not going to show the curvature. Okay, suppose if it would have been curvature like this, then I would not call this theta as independent, because for that you have to use certain theorems and all, certain principles. But whenever I am talking in terms of beams or frames, so they are even on the application of load, there will not be any relation between this axial deformation and this theta. So here these theta and axial deformations are independent. So total possibilities would have been 3j minus r. So the basic definition of indeterminacy is that it is like, what is indeterminacy? Whatever you don't know minus whatever you know. Like when we have calculated the indeterminacy of a structure, then what we used to do, total, first of all we are going to write total number of unknown forces minus total number of known forces. मतलब जो आपको नहीं पता minus जो आपको पता है. Similarly, when it comes to dk, it is also total possible unknowns minus total available things. मतलब जो आपको नहीं पता minus जो आपको पता है. अगर यहाँ पे रिएक्शन ना होते, then these would have been the 6 number of joint displacement जो आपको नहीं पता होती. But due to the introduction of these reactions here, so you know there are 4 displacements which are exactly going to be equal to 0. So out of these 3j unknown displacements, there are r displacements, r number of displacements which are actually known to you. So that's why dk is equal to 3j minus r, total number of unknown displacements minus total number of known displacements. And here the known displacements are nothing but the 0. So that's why the dk is equal to 3j minus r, isn't it?
Isn't it, my dear friends? Tell me. So whenever it is a case of rigid structure where for each joint 3 degree of freedoms are possible, so I'm going to write the expression for you can say, if I'm going to add one more column here, dk, then it is going to have how much? This formula will be 3j minus r. And similarly, if it would have been a 3D rigid joint, then the expression would have been 6j minus r. And if for each joint I'm going to have 2 degree of freedom, then I must say it is 2j minus r. And for 3D truss joint where I'm having all 3 possible degree of freedom, in that case the answer would have been 3j minus r. So please try to understand the concept behind this decay. Okay, so by using this, guys, you will be able to find the degree of kinematic indeterminacy. Is it clear to each of you? Please let me know this. Is it clear to all of you? Yes, yes, Kavya. All the trusses are pin jointed structures. You can say trusses are the special, you can say trusses are the special types of frames in which each and every joint is pin connected. Not even the internal joints, even the at the external level, if some of the reaction is going to be fixed, then I cannot call that structure as truss, because truss means only that structure which is able to take only axial forces. And if any fixity or rigid joints are going to come there, then moments and shear may also induced, even if I'm going to apply loading at the joints only. Okay. Okay, so good, great. So let me come here now. Okay, tell me the decay for this structure, guys. Tell me the decay of this. Manish, what are you writing? I'm asking about decay. मनीष सारी क्लासेस मत लगाया करो भाई.
सुबह से क्लास लगाओगे तो ऐसा ही होगा। Just see, it is rigid joint 3, 3, 3, 3. So it is 1 rotation, 0 here. So you can count dk as it will be 3, 3, 3, 3, 3. So 15, 16, 17. So it is going to be 17. And if you want to obtain this from the formula, then dk is equal to 3j minus r. So total number of joints are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 minus reaction. So 2 reactions are here. 2 reactions are here, vertical and horizontal, and 3 reactions are here. So total there are. So final answer is okay. Yes. Correct answer is 17. Correct answer is 17. Is it clear, guys? Is it clear to all? Okay. Now see here. Yes. Yes, Vishaka is right. Okay. Now see the next concept. Now see the next concept, my dear friends. Suppose, my dear friend, in the same question, suppose in the same question, I would have told you that let's say this member, this B member is axially rigid. If beam is axially rigid, then find dk. Tell me. Yes, Manish, every rigid joint is having 3 degree of freedom. That is what I told you here. For each 2-dimensional rigid joint, I am going to have 3 degree of freedom. Isn't it? Okay, so Barbina is asking, Barbina, have you got this? Have you got this? Okay, so see, what is going to happen here. So this member is axially rigid. This member is axially rigid. Okay, and it is fixed. This is actually rigid and it is fixed and it is roller. So in normal condition, the answer would have been 0 here
and 2. Here the answer would have been 2. But my dear friend, due to the non-axial deformation of member AB, now this beam is not going to further elongate or compress in the axial direction. Okay, in reality it is not axial rigid, but its axial deformations can be ignored in comparison to moment and shear deformation. So that is the purpose of saying it here axial deformation. Because many of you might be thinking that if it is axially inextensible, then how can it rotate or how can it can be having transverse shear. Okay, so axially rigid in structures means that we are going to ignore the axial deformations because those are quite less in comparison to shear and bending deformations, isn't it? So yes, it is 1. Why? Because although it is having permission, although this support is having permission in x direction and in z direction rotation, but due to the inextensibility of this member, this degree of freedom is going to be cut. Okay, so answer will be 2 minus 1. So you can see here one member is axially rigid. So your decay increases by 1. So in future guys, you can say if m members are axially rigid or inextensible, then decay decreases by m. So you can say that then the formula would be decay is equal to 3j minus r minus m, where m is the number of axially inextensible member. Is it right or not? Yes. So tell me guys, so I'm going to give you two questions here. Example number 2. It is having two part. A part, find decay if beam members are axially rigid, and second portion is find decay if all members are axially rigid. Okay, and guys, I'm taking 2 to 3 minutes break. In the meantime, you have to attempt these two portion, that for normal case and for axial rigid case. In first case, only beam members were axial rigid, and in second case, on all the members are axially rigid. So I'm taking 2 to 3 minutes break. Okay, in the meantime, attempt this question. Okay.
So for first, what is the answer? 14 and second 9. Yes, all are right. All are right. See, in first question, only three members are actually rigid. This one, and this one. So answer would be and second question. Okay. So next concept. It is an internal hinge. It is an internal hinge. So guys, please tell me the total number of possible degree of freedom. Tell me the total number of possible degree of freedom. Shashank is saying 3. What about others? 5. Manish and Vishakha are right. So correct answer is 5. So here it is 0. It is 1. And total there are 4. So answer is 5. But see how. Guys, at internal hinge, what is actually happening? There are two possible rotations, because left hand slope will not be equal to the right hand slope. Left hand slope and right hand slope may be different. So even if you are going to make it deflected diagram, let's say like this, then it may have its deformation something like this. Okay, so you can see here that you can have delta x common, you can have delta y also common. So this joint is going to have same delta x and same delta y, same linear deformation in x direction as well as in y direction. But here you can see that this slope and this slope may or may not be same. Okay, so due to this reason, I can say it is going to have total 2 theta. It can have total 2 thetas.
So total, when two members are connected at a hinge joint, then it can have one delta x, it can have one delta y, but it can have two theta z. So total they are going to have 4 degree of freedom. Total they are going to have 4 degree of freedom. Is it clear? So 4 at this hinge and 1 here. So total it will be 5. Suppose similarly, if in any other joint, suppose if 3 members would have been meeting, and due to some load and deformation, a deflected shape may be like this. Okay, so this joint can displace with one delta x, because linear deformation of all the member connected to this joint will be same. It can have one delta y, but it can have this one, and this one theta, 1, 2 and 3 theta. So here delta x is 1, delta y is 1, but thetas can be 3. So total they are having 5 degree of freedom. So when two members are meeting here, so at that particular time dk here was 4. So 4 can be written as 3 for a ordinary joint plus 1. And when 3 members are connected here, so the dk was 5. So 5 can be written as 3 for an ordinary joint plus 2. So I can say that when 2 members were meeting, dk increases by 1. When 3 members were meeting, then dk increases by 2. Similarly, if tomorrow 4 members will be meeting, then dk will increase by 3. And if m dash members are meeting, then dk will increase by m dash minus 1. So therefore, guys, I can make here a general statement which will state that which will state that which will state that if m dash members are meeting at two dimension hinge joint, then dk increases by m dash minus 1, where m dash is the number of members which are actually meeting at a hinge joint. So guys, if I want to formulate this, then I can say that dk is going to be m 3j minus r plus summation of m dash minus 1. Is it clear? Is it clear to all? Tell me, guys. Soumya is asking how 4, and Soumya, I have explained it here as well. So this is the original joint, and after deformation due to any loading, I am not interested in that, it can displace from here to here. So while displacing from here to here, you can see that this joint is connected with two members, and both of these members are going to displace with a common delta x. They both are going to displace downward with a common delta y, but their theta can be different. So they can have at most two different thetas. So therefore, for general loading, we have to count dk for all the possible cases. So therefore, I can say it is going to have one, you can say delta y, one delta x, and two thetas.
So therefore total they are 4 in number. Similarly, when 3 members were there, it will be having one delta common, one delta y common, and it can have all 3 thetas. Is it clear? It can have all 3 thetas. Okay, so one theta is already included in the joint, and the axis rotations component are 2. Okay, so axis rotation component are 2. Okay, Soumya, good. So, and one more last concept, that suppose if this is internal roller, this is internal roller. So tell me the decay here. Tell me the value of decay here. So similarly, you can see here, it is going to have one displacement here, 0 here, but here you can see at this joint, here delta y will be common, theta will be 1. Okay, but this roller is having 2 delta x, one for left member and another for right member. So at most it can have 2 different delta x value. So delta x is going to be multiplied by 2. So total here as well I can say 4. So this is 4 here and it is 1. So total decay of the system is 1. So I want to say you that whenever there is any internal hinge and 2 members are connected on that, or whenever there is any internal roller, if 2 members are connected on that, then decay increases by 1 1 1. But here the actually 1 is increases due to delta x, and at internal hinge there is an increase in 1 due to the additional rotation. Here 1 is being increased due to the additional axial deformation. Okay, because if you are going to deflect this, so you will be having you can have at most 2 different delta x, but delta y and rotation is going to same for the left member as well as for the right member. So whenever there is any roller, so you can always increase decay by 1. Okay, so if I now I want to formulate it generally, so dk is equal to 3j minus r minus m plus summation of m dash minus 1 plus n. Okay, so here you can see that what are these values. So here this j is the number of joints, r is number of reaction, m is axial rigid member, members
meeting at hinge, number of rollers. Yes, Barbina, in first there will be 2 plus 2, but actually I want to formulate it. Actually, I wanted to formulate it. So therefore, I have intentionally changed 2 plus 2 into 3 plus 1. Why 3 plus 1? Because 3 is the total possible number of joint for a rigid jointed, you can say for a rigid joint. Okay, for rigid joint it would have been 3. So additionally how much I have to add? Because these 3 can be incorporated in the joint. If I am going to consider this hinge joint as a normal joint, then normally we will be increasing 1 here. Normally we will be increasing 3 here. So apart from 3, what else I have to add? That is 1 only. So apart from out of 5, apart from 3, what else we have to add? That is 2 here. So see, this 3 plus 2 is, so 1 3 is going to add here because it will increase this j. So additionally what should be the increment? So this 2 is being taken care by this formulation. Okay, so that was intentionally. Yeah, in original it is 2 plus 2 and 2 plus 3, but just to formulate them I made them 3 plus 1 and 3 plus 2. Is it okay, Barbina? Shashank, slider can move vertical, but it depends upon its orientation. Suppose if it would have been like this, so here you could have said that here 0, or normally it can have, it is having delta x 1, delta y total it can be 2, because left hand vertical deformation may not be equal to right hand vertical deformation, but theta z is going to be common here. So total there will be 4. So I have to write 3 plus 1. Okay. Okay. And what this is slider you can say, or it is guided roller. So if this guided roller is at end, so this is although it is unstable structure, because two guided rollers are there, then this part will be directly moving down. But in this, the degree of freedom would have been 3 plus 1, and here it is only 1. Okay, because here delta x and delta y are fixed. Sorry, delta x and moments are fixed. Only it is going to deform in the vertical direction. Is it okay, Shashank? Tell me.
Okay, so now your turn because I have done. Sir, will you please tell how to count the number of axial rigid member? I am getting confused. Okay. Barvina, for that I can tell you. Please repeat this video. Okay, let me tell you this. Here I have told you that only beam members are axial rigid. So how many beams are there? One beam, second beam, and third beam. Okay. And in second case, I have written that all the members are axial rigid. So how many number of members are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay, so that's why I have written 8 here. Okay, and 3 here. So in earlier problem, only one member was axially rigid. Okay, so that's why I have decreased here 1. But my dear friend, whenever you are decreasing m, so especially in the case of beam, you always have to keep on your common sense. Why? Suppose the question is something like this. Suppose if I ask you what is dk if this member is axial rigid. If this member is axial rigid, but they may trap you only in the case of beam, not in the cases of frames and all. Okay. So what is the dk here? So don't say that sir has told that dk is 3j minus r minus m. So here j are 2, reactions are 5, and there is one axial rigid member. So don't say it is 6 minus 5 minus 1 0. So this will be wrong because see here you can say you are having 0 degree of freedom. Here you are having 1 degree of freedom, and that 1 degree of freedom is due to rotation, and this axial deformation is not here. Okay, because the end supports are already fixed for axial deformation, so no need to subtract this. If this would have been roller, in that case you could have subtracted this one from here. Okay. Yes, for that I want to tell you one thing. See, whenever such questions are being asked in GATE, so they clearly mention that whether the member is axially rigid or not, whenever they are asked in such questions in GATE. But whenever some question comes from ESE, so first of all, if nothing has been mentioned about the axial rigidity, so first of all, treat the member as axially non-rigid. You can say you have to keep you have to assume the member as your normal member. Okay, but if none of the option is matching, then you can make all of your member as axially rigid. Okay, so in that case, but give first priority to members as a non-rigid. But if no option is matching in the ESE objective paper, then you can treat all the members as axially rigid. Okay. If yes, if it is not mentioned in the question, then 3j minus r. If answer is matching by 3j minus r, then give it top priority. But if it is not matching and your option answers are much less than the calculated one, then decrease the number of members. Okay, now let me give you some numericals. So question is find dk.
if it does not match, all the members will be considered actually rigid. Yes, yes, Barvina. Yes. So for this particular case, tell me, you can say DK. So there is one internal hinge and this is internal roller. So Shashank is saying 32. See, 3, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 0, 1, 2. Now this is also considered as joint. So 3, you can say delta x, delta y, delta theta z, and there are 2 delta y's. So it is 3 plus 1. Okay. So now you can see 3, 6, 9, 12, 13 and 16. Okay, this is also left. So 4 members are meeting. So 3 are already there. Then due to 4 members, 3 I am going to add them all. Okay. So 2, 3, 7, 7 and 6, 13, 13, 16, 19, 20, 20, 32. So answer is 32. So DK is going to come as 32. Are we saying 26? No, it's 32. Now see how to tackle it with the formula. So DK is 3J minus R. So nothing has been talked about axial rigid plus summation of M dash minus 1 plus number of rollers. So you can say here, how many joints are here? So joints here are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 3 into 12 minus reaction. So how many reactions are here? 3, 2, 1 and 2. So total number of reactions here are 3, 2, 5 and 3, 8. Only one hinge is there, no? And how many rollers are here? So here I am having one vertical roller. So plus 1. So 36 minus 8 plus 3 plus 1. So it is 28 plus 4. So answer you can find it is 32. Is it clear? So correct answer is 32 for this.
Okay, guys, let's start our last topic. Although very less time has been left for that, but still we can tackle one or two numericals. Okay, so give the next heading. So any doubt so far? Okay, so next is internal loading in structure. So on the name of internal loading, we are going to see what is shear force, what is bending moment, and what is axial force. So shear, bending, and axial force, these are basically the internal forces which are developed due to the action of external load. Okay, so by actually the beam, frames, columns, etc., they are used to, you can say, resist the external load by the by the mean of their reactions in the form of internal forces. So these internal forces are found to be in the form of shear, bending, and axial. Is it clear? The shear, bending, and axial. Okay, so these we are going to discuss. Okay. Hmm. Okay. So shear, bending, and axial. So just to explain it, I want to take a question. See, suppose this is your beam. Okay. And let's say it is a cantilever beam. Okay. And here there is a load, let's say acting here. Let's say 100 kilonewton. Like this. Okay. And let's say the length of the beam is 10 meters. So guys, I want to, first of all, my first task here is to calculate the reactions at A. Tell me the value of reaction that I know that at A, all three possible reactions are possible. All three reactions are possible. That is RA, means vertical component of reaction at A. Let's say HA, horizontal component of reaction at A, and MA, means moment component of reaction at A. So these all three reactions, you can say, are possible there, isn't it? So how we are going to proceed actually here?
So what I am going to discuss only statically determinate beam under this heading. So right now also in our live classes as well, we are dealing only with the statically determinate beam. After that, we will be learning slope and deflection, the most important and crucial chapter of you can say structure, or you can say strength of material. After that, we will be touching the real part of structural analysis, which is force method as well as displacement method. Okay, so guys, here I am having all the three possible, you can say, degree of freedom. Okay, or then here I am having, sorry, all the three possible reactions. So let me take that those reactions as RA, let's say HA, and let's say you can take even MA. Okay, see my dear friends, listen. Whenever you have to find external reaction, then you can choose the direction as you want. So there is no restriction that horizontal you have to take towards right or towards left, or vertical towards upside or towards the downside, movement clockwise or anti-clockwise. So no restriction is there. Whatever direction you are liking, you can always choose that. Okay, but after that, my dear friend, what you have to do, you have to apply the equilibrium conditions, and even after applying the equilibrium conditions, if you can say all the values are coming positive, then it means the assumed direction of forces or reactions are correct. And if they are coming negative in sign, you can say that as an assumed direction of reactions are not right, so we have to just reverse the direction of the reaction. For example, so by considering the equilibrium of the entire system, I can calculate the value of HA, RA, and even MA. So for that, what I have to do, the first task is summation of Fx is equal to 0. If I'm going to do so, then I can write HA. Okay, then I can write HA plus HA is towards right hand side. So while calculating unknown, I can use the same convention which I used to adopt in our small classes like in 9th, 10th coordinate geometry. So HA is towards right, so I can take it positive. And this 100 is going to have two components. One component will be normal. One component will be normal, and another component will be, you can say, horizontal. Okay, so it can have all you can say possible two components. So this is horizontal and this is vertical. Why I am resolving this? Because it will ease my calculation of external reaction. So here you can say that HA is going towards right hand side, minus this red force is coming towards left hand side, and what is its value? What is its value? It is equal to 100. It is a 3, 4, 5 triplet. So the cos theta will be here 3 by 5. So if it is 3 by 5, then it will be 60. It will be 60 and it will be 80. Obviously kilonewton. So these green and red are the components. These green and reds are the components of 100 kilonewton, which are acting at an angle of, you can say, 53 degree, because 345 is 53 degree. Okay, so now HA is toward right hand side and 60 is going to come towards the left hand side, so it is equal to 0. So you can say here that HA is equal to 60. So you are getting HA is equal to plus 60. It means the assumed direction is correct, so HA can be keep in the rightward direction only. Okay, so doesn't matter whatever the sign you are taking.
Suppose if some of you are solving it by taking right hand side as negative, then you would have written here that minus HA, right hand side is negative, then left hand side must be positive. So plus 60 is equal to 0. So still you can experience your same answer. So it's not going to make any difference whether you are taking rightward positive or leftward positive. Okay, as long as whatever equation you are using, they are same in both the ways. So here also it is HA minus 60 is equal to 0. Here also if you are taking negative sign common, then it is HA minus 60 is equal to 0. Is it clear to everyone? So HA value is 60 here. HA value is 60 here. Okay. So after that, see, I have to find my another force, which is you can say RA. So for RA, what I am trying, I am simply doing summation of Fy is equal to 0. For that, you can use RA minus 80. Upward, if upward is positive, then 80 will be negative. So from here you are getting that RA is equal to plus 80. So plus 80 stands for that assumed direction of RA is also right. So it's going to be equal to upward 80 kilonewton. Okay. So similarly, if you want to find the value of MA, if you want to find the value of MA, then for that you have to consider the equilibrium about any point. Let's say I am considering about A. So here it will be equal to, at A, keep your finger or pen and see the effect of all other forces at A. Okay, so RA is not going to create any impact here. And don't consider this 100 because 100 is already broken into two components. Because this 80 and this 60 again going to give you 100 in this direction. Okay, so at A, RA is going to create 0 moment. So I will not write that. At A, MA is directly coupled. So I have to write that. This 60 is not going to contribute for moment about A, but this 80 will be again clockwise. So 80 into 3, 80 into 10. So this is MA, this is 80 into 10. So this is equal to 0. So MA is equal to minus 800. It means I have committed a mistake here in assuming the direction of MA. Okay, so it means since the value is negative 800, so it is nothing but it is saying that it is 800 but it is in anti-clockwise direction, not in the clockwise direction. So the correct you can say the correct is this one, and it's coming out to be 800. It is coming out to be 800 kilonewton meter. Is it clear? 800 kilonewton meter. So it's going to be like this. So guys, by considering the equation of equilibrium, जो करते थे ना हम लोग r minus 3, वो ये 3 है. First equation, second equation, and this is third equation. So this is basically your r minus 3. Okay. Now guys, you have achieved here the external forces. Now I want to see the component of these forces. Let's say at a distance of 4 meter. Let's say I have selected a point D, which is at a distance of 4 meter from the left support and 6 meter from the right support, which is actually acting at a distance of 4 meter from the left support and 6 from the right support, isn't it? So how we are going to calculate the various component of forces, internal forces at D? Okay, so we have to look on that. So for that, what I'm going to draw the free body diagram of this member about D. I'm going to draw free body diagram about D. So let's see that. So I'm cutting this about D. So this is my left portion,
and this is my right portion. Okay, this is my left portion and this is my right portion, isn't it? So at left portion, what are the various you can say forces or reaction? They are Ra, they are Ha, and they are as well moments. Okay, and here you will be having certain internal forces. Let's say it is X, let's say it is Y, and let's say it is Z. Okay, so okay. Similarly, you can assume here some movement here. Similarly, you can assume here some you can say reaction here, because whenever I am going to cut a joint, so here forces will be there at the junction, but I don't know about these forces right now. I don't know about these forces. And let me consider the equilibrium of right hand side. So if it is 4 meter and if it is 6 meter, and here the load is coming out 100, isn't it? So it's going to be like this. So this is your A, this is you can say it is D, or you can say it is left of D. It is also D, but let's say right hand side of D, and it is having B. Okay, like that. Okay, so this is the junction. So for the time being, let's assume this is V, L, V right, HL, H right, and you can say ML, M right. Is it okay? So now see, summation of, so these reactions are already known to you guys. It is 60 upward, 80 60 rightward, 80 upward, and anti-clockwise 800. So it is 60, it is 80. Is it okay? Tell me. Sorry. Okay. So now consider the equilibrium of this portion. Now let's say consider the equilibrium of this portion in order to find the value of these three unknown. But these are unknown, but these can be tackled only by using the equation of static equilibrium. So by using the equation of static equilibrium, guys, you can say that here summation of Fy is equal to 0. If summation of Fy is equal to 0, then you can say AT plus VL is equal to 0.
it means that VL is going to be minus 80. Okay. Now summation of fx is equal to 0. So it means plus 60 plus VL is equal to 0. So VL is going to be minus 60. Okay. If you are going to do summation of mz is equal to 0, then you can say that it is about, let's say, A, then it is ml clockwise. 80 will be creating 0 moment, 60 will be creating 0 moment, plus 100 will come, it is directly moment. HL will not be creating any moment. ML I have taken already, minus you can say VL into 4. So this is ML. ML is equal to minus 100 plus VL into 4. So it is minus 100 plus VL means minus 60 into 4. It is minus 340. It is equal to minus 340. Is it clear? Is it all right? So 80, is it okay? No. कितना आएगा ये? Plus ml plus 100 minus VL into 4 is equal to 0. So ml हो जाएगा VL into 4 minus 100. So VL is already negative 60. So minus 240 and it is minus 100. So देखो ठीक है क्या ये? Yeah, this is the difference. So now guys, I'm completely exhausted. I'm completely exhausted. So it's 60 plus HL ओके डोंट वरी एक तो नंबर इतना शानदार है 420 हो सकता है इसलिए मेरा आंसर ना आना चाह रहा है ये ओके डोंट वरी सी ऑल दीज थ्री values are negative all these three values are negative it means I have taken each direction as opposite okay it means actually it is 80 downward it means actually it is you can say 60 but leftward and here you can see it is 420 but it is in anti-clockwise direction it is in anti-clockwise direction so let me correct these directions which I have taken intentionally wrong so it's going to be like this
Similarly, guys, if you are going to apply these equilibrium condition for the right hand system, then you can see, then see here, summation of fx is equal to 0. So you can say minus hr minus 60. So hr is minus 60, or you can say it is 60 but in the rightward direction. Okay. Similarly, if you are going to do here, summation of fy is equal to 0. So it is vr minus 80 is equal to 0. Why minus 80? Because 100 cosine component is minus 80%. So vr is 80. This is right. So or you can say it is 80 but in upward direction only. So now if you are going to perform about dr, so this is equal to mr clockwise. VR is not going to participate, HR is not going to participate. This component of 100 which is 60, it is also not going to participate. So plus कितना आ गया ये 480. पहले तो 420 आ रहा था ना भाई, क्या लोचा है? पहले कितना आ रहा था? 420 आ रहा था क्या? Okay, so it is 80 into 6, 40. Okay, so this is okay. It is, or you can say it is 480 but is in anti-clockwise direction. Okay, just see here. What is happening here? See, it is 480, no doubt. 8 6 are 48. It is, you can say, 80, and it is 60. Movement is not balancing, so let me check it. Why movement is not balancing? Okay, it is not balancing because it is 800. Okay, so this is the reason. So this is for 800. Okay, so 800 minus 320, 480. 480 is right. 480 is right. Okay, assume here it is m left. So now consider its equilibrium. So you can see that it is 800
minus ml plus 80 into 4, so 800. So ये आ गया downward 60. Okay, now it is right. So you can seriously see the tiredness. So what is actually happening? Okay, so yes, now it is right. See here. Uh, Let me take it as a unknown one once again. It is ml. So by considering the summation of mz is equal to 0 about any point a, so I can say minus 800 plus ml plus 80 into 4 is equal to 0. So ml is going to be equal to 320 negative plus 800. So it is going to be 480. Okay, so it is going to be 480. So this is 480 now. Okay, so guys, you can see, you see here axial forces are 60 and 60. Here vertical force are 80 and 80. Here moments are also 480 and 480. Here the sum of forces at joint D, here the sum of forces at joint D are equal to 0. So here net force about x is equal to 0, net force about y is equal to 0, and similarly net moment is at D is equal to 0. But it is not mean that at D no axial force, no shear force or no moment is going to come. Okay, so here the sum is equal to 0, but due to that equal zero sum, equal and opposite forces are being induced in the direction of axial direction, or you can say in the direction of vertical one, or you can say in the direction of movement. So these axial forces are horizontal forces are axial forces, these vertical forces are shear forces, and these you can say rotational forces, a couple, are known as bending moment. So these are the internal loadings, and this is bending moment, and this is axial force, and it is shear force. Okay, so rest we will discuss it. And guys, please you can watch my lecture on SFD BMD. Lecture number I don't know, but I think it's around 7 8 like that. So please go through all the sessions. Now you will be able to grasp the concepts. Okay. So thanks a lot, guys. Have a great day. Thank you, Shashank. Thanks a lot. So take a 2-3 minutes break. After that, the birthday boy is going to start the lecture on environmental engineering. So Mrigank Saurav sir will take my relay after 9 o'clock. So take 3 minutes break and he will be with you guys. Okay. So कल टेस्ट है 11 बजे से, प्लीज डोंट फॉरगेट टू अपीयर फॉर दैट. And yes, last but not the least for me, if some of you want to take any Unacademy Plus subscription, then please download the Unacademy Learners app, and from there you can apply this code as 10. Okay, so great, have fun. Hello everyone.
जल्दी सब लोग ऑनलाइन हो जाइए। हेलो लक्ष्मी। चलिए सब लोग ऑनलाइन हैं। हेलो एवरीवन, हेलो। बिल्कुल बहुत बढ़िया रहा निखिल। अभी और बढ़िया होने वाला है, आप लोगों के साथ और बढ़िया होगा अभी दिन। चलिए जल्दी सब लोग ऑनलाइन हो जाइए। जितने लोग ऑनलाइन हैं बच्चों आप शेयर कर दीजिए। आज का पार्ट कल से ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो कल जिन लोगों ने पार्ट नहीं देखा था, कल मैंने आपको जो डिस्कस किया था 19 और 20 का, मोस्टली 20 के गेट 20 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसी के साथ आपका कंप्लीट रिवीजन वाला पार्ट भी कर दिया था। तो कंप्लीट रिवीजन भी हुआ आपका, आपने कुछ नए पॉइंट भी समझे। कई लोग जो कंप्लीट मिक्स फ्लो रिएक्टर नहीं जानते थे, प्लग फ्लो रिएक्टर के बारे में नहीं मालूम था, उनको मैंने वो चीजें बता दी। तो जो लोग नहीं देखे हैं पहले आप कल वाला भी देखिएगा इसके बाद। और आज तो फिर हम नया बात करने वाले हैं। तो आज फिर से कंप्लीट रिवीजन होगा विद द क्वेश्चन, बट ऑल द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम गेट प्रीवियस ईयर, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको ट्रेंड भी मालूम हो और आप सब लोग मेरे सामने वो क्वेश्चन बना पाओ। ठीक है, चलिए तो जल्दी सब लोग आ जाइए एवरीवन। जल्दी सब लोग आप जहां भी, चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप पे या जहां भी कनेक्टेड हो, सब लोग जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए। जहां भी आप कनेक्टेड हो, वेदर टेलीग्राम ग्रुप और जहां भी आप सब लोगों को कनेक्टेड कर दीजिए। आज वेस्ट वाटर वाला पार्ट देखेंगे निखिल। आज वेस्ट वाटर वाला पार्ट देखेंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप चैनल वहां पे हर जगह आप लिंक शेयर कर दीजिए जल्दी से। जल्दी से बच्चों जल्दी से काम कीजिएगा ताकि क्लास को फिर हम बहुत अच्छे से निकाल पाए। थैंक यू लक्ष्मी। चलिए जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए सब लोग। तो जब तक सब लोग आते हैं तब तक आप सब लोग कुछ क्वेश्चन कर लो। आज इंट्रो वाला पार्ट में बाद में करूंगा, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, तब तक सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों। देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को कौन बनाता है। देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को कौन बनाता है। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा जल्दी से। थैंक यू कोमल। एवरीवन ट्राई द क्वेश्चन फास्ट। एवरीवन ट्राई द क्वेश्चन फास्ट।
चलिए जल्दी ट्राई कीजिए, जल्दी ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, सब लोग जल्दी से ट्राई कीजिए। चलिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। A river has a flow of 1000 million liter per day of MLD. That is MLD only. BOD5 of given, that is given as 5 milligram per liter. DO value, DO level is 8 milligram per liter before receiving the wastewater discharge at a location. For the existing environmental conditions, the saturation DO level is 10 milligram per liter in the river. Wastewater discharge of 100 mld with the BOD5 of 200 milligram per liter and DO level of 2 milligram per liter falls at that location. Assuming complete mixing of wastewater and river water, the immediate DO deficit, the dissolved oxygen deficit, that means they are asking you D naught. They are asking you D naught. चलिए जवाब आपका क्लियर हो चुका होगा, कई लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे अभी तक। मेरे को कमेंट सेक्शन में सिर्फ अभी 2 लोगों का जवाब आ रहा है, बाकी लोग जवाब बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। कमेंट सेक्शन में सिर्फ 2 लोगों का जवाब आ रहा है। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। लक्ष्मी और साई ने जवाब दे दिया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो आप ये काम कर लो कि आपने डीओ मिक्सचर का जो आपका वेस्ट वाटर और जो रिवर वाटर दोनों मिक्स हो रहा है, अगर आप डायग्राम में देखो तो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। ये आपका रिवर है और इसमें आप क्या कर रहे हो, अपना वेस्ट वाटर मिक्स कर रहे हो। सो रिवर का आपका ये है QR और उसका कॉन्सेंट्रेशन CR बोल दो, और इसका कॉन्सेंट्रेशन में QW और कॉन्सेंट्रेशन CW। तो आपको मालूम है फॉर्मूला बच्चों, यू ऑल नो द फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? C mix will be equal to QR into CR plus QW into CW upon QR plus QW upon QR plus QW। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या है आपको। यहाँ पे आपको डेफिनेटली गिवन होगा कि BOD5 गिवन है, तो आपको यहाँ पे किस चीज की वैल्यू बोल रहा है निकालना है, यहाँ DO मिक्स की वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो BOD5 वाले वैल्यू को मैं नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ DO मिक्स की वैल्यू। तो DO की वैल्यू रिवर में है 8 मिलीग्राम पर लीटर बिफोर रिसीविंग द वेस्ट वाटर। सो DO फॉर R इज गिवन टू यू एंड द फ्लो रेट इज 1000 मिलियन लीटर पर डे। ओके, चलिए तो मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूं बच्चों, DO मिक्स। 1000 हो गया रिवर का डिस्चार्ज इंटू 8 इज द DO वैल्यू प्लस QW कितनी है 100 mld इंटू उसका DO लेवल कितना बच्चों 2। सो 100 इंटू 2 डिवाइड बाई QR प्लस QW मतलब 1100। कितनी आ रही है DO मिक्स की वैल्यू? व्हाट इज द DO मिक्स वैल्यू? थैंक यू अर्चना। 1000 into 8 plus 100 into 2 upon 1100। So 1000 into 8 plus 100 into 2 divided by 100 divided by 1100 कितनी आ रही वैल्यू? So value you are getting 7.45 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट बात जो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कि आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि कितना DO मिक्स है, आपसे पूछा जा रहा है कि एट द पॉइंट ऑफ मिक्सिंग आपकी DO डेफिसिट कितनी है। सो DO डेफिसिट कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डेफिनेटली आपको DO डेफिसिट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था
that du नॉट इज नथिंग बट ds डिसॉल्व ऑक्सीजन एट सैचुरेशन, जिसको हम ds भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ds saturation DO minus DO value, so here that will be DO mix. So आपके पास है 10 minus 10 ही वैल्यू है, so 10 minus 7.45, it will be 2.55 milligram per liter, 2.55 milligram per liter. चलिए, so only 2% has given me the right answer, guys. Only 2% has given me the right answer. So इस सवाल का जवाब साई ने सही दिया था और लक्ष्मी ने सही दिया था 2.54. चलिए जल्दी से जवाब. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जवाब दीजिएगा सब लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, जल्दी जवाब दीजिएगा सब लोग. चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जवाब दीजिएगा सब लोग. क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है. अभी जो है हम पूरा कंप्लीट डाउट ले रहे हैं, सबका डाउट ले रहे हैं. तो बाद में अगर आप मेरे को, जो भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो बाद में अगर मेरे को कहीं डाउट पूछ रहे होंगे तो मैं उनको जवाब बहुत ही लेट दूंगा, क्योंकि मैंने आपको एक पूरा क्लास दिया है डाउट के लिए. तो आपके जो भी डाउट है, कंसेप्चुअल डाउट, आप सब लोग कमेंट में पूछ डालिए और साथ में क्वेश्चन भी बनाते जाइए, साथ में क्वेश्चन भी बनाते जाइए. चलिए कोई बात नहीं शिवम, लेट हुआ, कोई बात नहीं. अभी हमने इंट्रो दिया भी नहीं है, ये तो आपको माइंड फ्रेश अप करने के लिए क्वेश्चन मैंने ट्राई किया. तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए. तब तक उन बच्चे जो नए जुड़े हैं मेरे से अभी, उन लोग को मैं थोड़ा सा स्मॉल इंट्रो दे देता हूं. बाकी बच्चे ट्राई कर सकते हैं जो लोग क्वेश्चन को देख लिए हैं. सो बच्चों, जो लोग आज पहली बार मेरे से जुड़े हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं. My name is Mrigank, expert in GATE ESE and other technical exam, and subject which I am taking, that is environmental engineering, fluid mechanics and open channel flow. And I am having more than 3 year teaching experience, especially in this GATE and ESE exam. And after that, after completing my master from NIT Warangal, I went for research work in, that is in BARC, Bhabha Atomic Research Center, and the topic you all know, that is nothing but air pollution, क्योंकि मैंने आपको वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, तो आपको टॉपिक भी मालूम है. राइट साइड में आप बच्चों आपको दिख रहा होगा MRI10, दैट इज माय कोड. यू ऑल कैन यूज दिस कोड नॉट ओनली टू गेट 10% ऑफ, वो तो आपको मिलेगा ही, साथ में आपको मैं प्रॉपर गाइड करूंगा ताकि आपका कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो, और दूसरा आपको सही टाइम पे सही मोटिवेशन मिलती रहे ताकि आप बेस्ट से बेस्ट रैंक अपना ला पाए. नेक्स्ट बच्चों, जिनको भी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में जानकारी चाहिए, मैं उनके लिए बता रहा हूं. जिनको जानकारी है, नो बात, वो आप क्वेश्चन में जो मैंने दिया है उस पर फोकस कीजिए. प्लस सब्सक्रिप्शन की जरूरत की क्या है, सबसे पहले तो बता दूं कि 1 अगस्त से हम एक नए तरीके से चालू कर रहे हैं. तो आपको जिनको भी ज्वाइन करना है, आपके पास 1 अगस्त एक बहुत ही अच्छा मौका है, ज्वाइन कीजिए. 6 मंथ आपके पास प्रॉपर रहेगा, आपका कोर्स कंप्लीट होगा, और यही सबसे बड़ी गारंटी है प्लस की, ये सबसे बड़ी अच्छी चीज है प्लस की, कि आपका कोर्स कंप्लीट ऑन टाइम होता है, ताकि बच्चे को रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम मिल सके, बच्चा आराम से पढ़ सके और इसका फायदा उठा सके. बाकी सारी चीजें जो एडवांटेज है, लाइक इंग्लिश और हिंदी में कोर्सेस रहेंगी, वो आपको मालूम है. डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा, वो भी आपको मालूम है. डाउट क्लियरिंग सेशन का क्या है कि आफ्टर 3 लेक्चर आपको एक डेडिकेटेड क्लास सिर्फ डाउट क्लियरिंग के लिए मिलता है. आप सबको ये बात मालूम है. नेक्स्ट, वीकली टेस्ट बच्चों,
हर वीक में आपको एक वीकली टेस्ट होता है और उसका फायदा ये है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो। आपको पता चल सकता है कि वेदर यू आर लैगिंग इन कैलकुलेशन पार्ट और कैलकुलेशन या फिर आप कंसेप्ट में लैग कर रहे हो। अगर आप कंसेप्ट में लैग कर रहे हो तो फैकल्टी से बात कर लीजिए, डाउट्स इसमें क्लियर कर लीजिए अपने डाउट। अगर आप कैलकुलेशन में लैग कर रहे हो दैट मींस यू नीड टू डू मोर प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा करना पड़ेगा। नेक्स्ट, चाहे आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए या रैंक इम्प्रूवमेंट बैच, दोनों में से कोई भी जो आपको एक्स्ट्रा है, मतलब अदर देन आपको फुल सिलेबस अदर पार्ट है ये, बट इन सारे अदर पार्ट के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल कम अंडर ए single platform, and for that you have to pay a single money, that is a plus fee, and that is also very nominal amount guys, बहुत ही nominal amount है। for 12 month it is only 22,500 और if you go with the per day it is nothing but 50 to 60 rupees per day, बहुत ही nominal amount है guys। एंड इतने अच्छे अमाउंट में आपको इतना अच्छा कंटेंट, टाइमली कंटेंट, प्रॉपर चीजें मिल रही हैं। आप चाहो तो इसका फायदा उठा सकते हो, नहीं अगर आप में वो जोश नहीं है, वो करना की चाहत नहीं है, वो रैंक लाने की चाहत नहीं है, तो ये फिर सारी चीजों का मतलब नहीं है। जिनको करना है वही इन चीजों पे फोकस कर पा सकते हैं। नेक्स्ट, उन सारे बच्चों को जिनको एक बार पेमेंट करने में हमको प्रॉब्लम होती थी, उन सब सारे बच्चों के लिए हमने ईएमआई का ऑप्शन दे दिया है, क्रेडिट कार्ड से पे करने का ऑप्शन दे दिया है। ये सारे ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं ताकि बच्चा पढ़ सके, उसको पैसे की वजह से, उसको पैसे नहीं होने की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहा हो, ऐसा ना हो। ठीक है, तो ये सारा हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया बच्चों। टेलीग्राम ग्रुप के बारे में आप सब लोग जानते हो, दैट अनअकैडमी गेट एंड ईएसई सी दैट टेलीग्राम ग्रुप। अभी यहाँ पे मोर देन 2000 स्टूडेंट है, आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा, हर क्लास का नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब कुछ मिलता है, तो आप उसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए बच्चों। और गेट ग्रुप, गेट एस्पिरेंट ग्रुप, आपको फेसबुक का ग्रुप है। बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ आप भी पोस्ट कर सकते हो, इन दिस ग्रुप यू आर ऑल्सो अलाउड टू पोस्ट। सो इफ यू हैव एनीथिंग रिगार्डिंग doubt or any conceptual doubt, anything, you can directly post and tag that faculty, he will reply you as early as possible. Now जो बच्चों अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को, डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल को, क्योंकि आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल रहा है जो आप पिछले 3 महीने से एंजॉय भी कर रहे हैं, और आगे भी हम वैसे ही कंटेंट आपको देते रहेंगे। और आपको कोई भी डाउट रिगार्डिंग इन्वायरमेंट ओसीएफ, आप बिल्कुल जो आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है, आप मेरे को बिल्कुल पूछ सकते हो इस नंबर पे, दैट इज 9515367680। यू ऑल कैन मैसेज मी इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम गाइज। और अगर आपको कंटेंट अच्छा भी लगता है बच्चों, आपको अच्छी चीज लगती है कि बाकियों को भी हेल्प होगी ये, तो हमारी रिक्वेस्ट रहती है हमारी टीम की तरफ से कि आप इन चीजों को शेयर भी करें ताकि बाकी बच्चे भी इन चीजों का फायदा उठा सके। क्लियर है? चलिए, तो एनी डाउट अगर आपके साथ है कोई बच्चों तो आप पूछ लीजिए, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन पार्ट। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने रेडी है, देखते हैं सबसे पहले जवाब मेरे को कौन देता है। लेट्स सी हु विल गिव द राइट आंसर। एसआरवीपीओपी सर आई नीड हेल्प, बताइए सर एसआरवी क्या हेल्प चाहिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है। लेट्स सी हु विल गिव द राइट आंसर फर्स्ट। बिल्कुल 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 आएगा लक्ष्मी, एफएम क्लास भी आएगी। मैंने आपसे वादा किया था और मैं अपना वादा जरूर पूरा करता हूं। सो मैंने आप लोगों से वादा किया था एफएम क्लास भी लेके आऊंगा। आप लोग शेयर करते रहिए चीजों को, जितना ज्यादा आप अपनी कम्युनिटी बढ़ाओगे, इस प्लेटफॉर्म पे जितना ज्यादा बच्चे जुड़ोगे, हम उतना ज्यादा मोटिवेट होंगे और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीजें इमेजिनेशन के थ्रू बताएंगे आपको, ग्राफिक्स के थ्रू बताएंगे ताकि चीजें दिमाग में घुस जाए। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप सबने इन्वायरमेंट और ओसीएफ देखा है, मैंने कोशिश किया है आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने का। वैसे ही एफएम भी बनाऊंगा, लेकिन अभी पहले इस क्लास में इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नाउ एवरीवन जस्ट एसआरवी बेटा, वो आपका जो डाउट है, आपका जो प्रॉब्लम है, आपके प्रॉब्लम को मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने का, आप टेंशन मत लें। आप मेरे को इस नंबर पे पहले मैसेज कीजिएगा। अभी क्लास के टाइम में उन चीजों पे बात नहीं कर सकता मैं, अभी क्वेश्चन पे, बाकी बच्चे क्वेश्चन पे फोकस है। तो आप ये वाला जो डाउट है आपको मेरे को मैसेज कीजिएगा, आई विल डिस्कस योर डाउट, और जो पॉसिबल होगा आपको मैं ऑप्शन बता दूंगा। ठीक है, ठीक है एसआरवी।
चलिए जल्दी बताइएगा बच्चों। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। थैंक यू सर। चलिए जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए, आंसर जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आंसर आप सब लोग बता दीजिएगा। A stream with a rate of 5 meter per second having a ultimate BOD of 30 milligram per liter. A wastewater discharge of 0.2 having BOD of 500 milligram per liter. Joins the stream at a location instantly get mixed up completely. Okay, so the cross section area of a stream is 40 meter square which remains constant. The BOD exertion rate constant, that is K value 0.3 meter per day. The BOD remaining at 3 kilometer downstream from the mixing location. चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा, देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है। तो बच्चों ऐश्वर्य सर ने जो स्ट्रक्चर एनालिसिस की टेस्ट आई थिंक आपको गलती से अनाउंस कर दी थी, टुमारो बता दिया था, तो वो आपको डे आफ्टर टुमारो है, इस बात का नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वो कल नहीं, कल के बाद वाला जो कल है ना उसमें होगा, मतलब डे आफ्टर टुमारो होगा, ठीक है। और कल से आपका जो रेगुलर क्लास है वो ऐसे ही चलेगा। 30 और 31 आपका रिवीजन वाला पार्ट था। फ्रॉम 1 अगस्त नॉर्मल रेगुलर क्लास विल बी देयर, ठीक है। तो सब लोग को मैं बता दिया, वैसे आपको ये मालूम भी होगा बट मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन आसान है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। चलिए चलिए, तो क्वेश्चन में सिंपल सा जवाब है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बीओडी, रिमेनिंग बीओडी निकालना है। चलिए तो सबसे पहले एक नया पेज लिया जाए। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा कि बीओडी मिक्स कितनी है। सो बीओडी मिक्स, दोनों बीओडी कितनी गिवन है, एक जगह अल्टीमेट बीओडी गिवन है और एक जगह बीओडी 5 गिवन है, तो आपको दोनों जगह सबसे पहले अल्टीमेट बीओडी निकालना पड़ेगा। तो दोनों जगह आपको अल्टीमेट बीओडी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले तो वेस्ट वाटर के केस में आपको जो वैल्यू है वो क्या गिवन है, बीओडी 5 गिवन है। फॉर वेस्ट वाटर कितनी है वैल्यू, 500 मिलीग्राम पर लीटर, 500 मिलीग्राम पर लीटर। नाउ विद दैट यू हैव टू फाइंड आउट अल्टीमेट बीओडी, क्योंकि वहां जो स्ट्रीम का गिवन है वो तो अल्टीमेट बीओडी गिवन है। तो आपको मालूम है फॉर्मूला, आप सबको मालूम है, L नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस के इंटू टी विल बी इक्वल टू 500। सो L नॉट विल बी क्या होगा बच्चों, 500 अपॉन 1 माइनस ई टू पावर माइनस के की वैल्यू 0.3 और टाइम तो 5 है ही। तो L नॉट की वैल्यू जल्दी बताइएगा क्या होगा। तो दीक्षिता ने, रॉ ने और लक्ष्मी ने, इन तीनों ने जवाब दे दिया है, इन तीनों जवाब दे दिया है। अब वो जवाब सही है गलत ये तो आप लोग बताओगे। पहले मेरे को L नॉट की वैल्यू बता दिए सब लोग। एवरीवन कैलकुलेट एंड टेल मी द L नॉट वैल्यू। एवरीवन कैलकुलेट एंड टेल मी द L नॉट वैल्यू। और जो ये L नॉट वैल्यू आएगी किसकी आएगी, वेस्ट वाटर की आएगी। सो 500 डिवाइड बाय 500 डिवाइड बाय 1 माइनस e टू द पावर माइनस 0.3 इंटू 5, वैल्यू कितनी आई, 643.608।
643.608 मिलीग्राम पर लीटर। अब आपको क्या मालूम है कि आपने रिवर का अल्टीमेट बीओडी अलग है, वेस्ट वाटर का अल्टीमेट बीओडी अलग है, लेकिन जब दोनों मिलेंगे तो आपको क्या बनेगा, एक एल नॉट मिक्स बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एल नॉट मिक्स बनेगा। कैसे निकालेंगे एल नॉट मिक्स, आपको फॉर्मूला भी जस्ट बताया मैंने। तो रेट सबसे पहले 5 इंटू 30, पहले मैं रिवर की बात कर रहा हूं, सो 5 इंटू 30 प्लस 643.608 इंटू फ्लो है 0.2, फ्लो है 0.2 डिवाइड बाय बच्चों क्या है 5.2। एल नॉट मिक्स कितनी आई जल्दी बताइए। व्हाट इज द एल नॉट मिक्स गाइज, यू हैव टू टेल मी फास्ट। व्हाट इज द एल नॉट मिक्स, व्हाट इज द एल नॉट मिक्स, व्हाट इज द एल नॉट मिक्स गाइज। आज वाले क्वेश्चन अगर आप सारे क्वेश्चन सही बना रहे हो ना, तो समझ जाना कि आप किसी भी एनवायरमेंट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। मैंने आज और कल वाला जो आपको क्वेश्चन करवाया है, कल जो इतने क्वेश्चन करवाए और आज जितने क्वेश्चन करवाए, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने करवाया भी आपको बच्चों। ठीक है, चलिए जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपने छोड़ दिया है। कितनी आ रही है, 53.60, 53.60 मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम 53.60 मिलीग्राम पर लीटर। अब एल नॉट मिक्स के बारे में आगे बात देखिए कि आपको क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बीओडी रिमेनिंग, दैट मींस दे आर आस्किंग यू एलटी वैल्यू। रिमेनिंग बीओडी आपसे पूछ रहे हैं, मतलब वो एलटी वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। तो आपको फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एल नॉट ई टू पावर माइनस के इंटू टी। अब आपके पास के तो है, एल नॉट मिक्स भी आपने निकाल लिया है, बट टाइम यू डोंट हैव। सो टाइम के लिए आप क्या करोगे बच्चों, टाइम के लिए आप क्या करोगे, आप सिंपल सी बात यूज करोगे कि आपको यहां देखिए क्यू आपको मालूम है, आपका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया आपको मालूम है, तो वेलोसिटी निकाल लोगे। लेंथ आपको गिवन है, सो लेंथ अपॉन वेलोसिटी करोगे तो टाइम आ जाएगा। चलिए वो करते हैं सर, कैसे करिएगा वो देखिए। सबसे पहले आप क्या निकाल रहे हो, वेलोसिटी, दैट विल बी क्यू अपॉन एरिया। तो क्यू कितना हो गया हमारा 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड और 5.2, सो इट विल बी 5.2 अपॉन एरिया कितनी थी, आई थिंक 40, सो एरिया विल बी 40। कितनी वैल्यू आई v की, how much value of v you got, 5.2 upon 40, that is 0.13 meter per second, 0.13 meter per second. Now if you know the velocity, you all can find out the time, that is length upon velocity. So length is 3 kilometer, so 3000 upon 0.13, कितनी आ रही है वैल्यू, 3 into 10 to power 5 upon 13, and this value will come in second, so I am converting this part into day. So कितनी आएगी वैल्यू, into 24 into 3600, so you are getting 0.267 day. So आप लोग का भी आंसर यही आ रहा है, मैं कमेंट सेक्शन में चेक कर लेता हूं, 0.267 day. So now BOD remaining will be equal to LT and that will be equal to L naught mix. So L naught mix कितना है 53.60
into e to power minus 0.3 into 0.267. कितनी वैल्यू आ रही है? So after calculating this value 53.60 into e to the power minus 0.3 into 0.267, what you will get? What you will get? 49.47. 49.47 मिलीग्राम पर लीटर. 49.47 मिलीग्राम पर लीटर. तो आई थिंक किसी ने भी मेरे को सही जवाब नहीं दिया था. एक आई थिंक रॉ ने मेरे को 49 पॉइंट समथिंग एक जवाब दिया था. बाकी किसी ने मेरे को सही जवाब नहीं दिया. दे आर आस्किंग यू बीओडी रिमेनिंग. तो कई लोग बीओडी रिमूव निकाल रहे होंगे एल नॉट माइनस एल टी करके, बट वो रिमेनिंग पूछ रहे हैं आपसे. क्वेश्चन में डायरेक्टली देखिए मेंशन है यहाँ पे रिमेनिंग. they are asking you the remaining part. So the answer will be 49.47. Answer will be 49.47. So anybody having any doubt बच्चा आप पूछ लीजिए. किसी को भी किसी भी चीज में डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, जल्दी से पूछ लीजिए. जल्दी बताइए. चलिए तो शिवम बोल रहे हैं राइट है मेरा. शिवम का आंसर मैं देख लेता हूं एक बार. अच्छा शिवम आपने आंसर दिया नहीं था लेकिन चलिए सबको समझ में आ गया क्वेश्चन. अल्टीमेटली समझ में आ गया क्वेश्चन. चलिए आइए नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रेडी है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए रेडी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडी गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडी गाइस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है. आपको मिनिमम डायमीटर बताना है. देखते हैं सबसे पहले मेरे को कौन जवाब देता है. मेरा ध्यान पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन पे है. सो लेट्स सी हु विल गिव द राइट आंसर फर्स्ट. देखते हैं इस बार जोर लगाना है. ऐसे कई सारे प्रॉब्लम कर चुके हैं तो एक बार में बनना चाहिए. एक जवाब और सही जवाब आना चाहिए. जल्दी बताइए एवरीवन. Everyone give your answer fast.
चलिए जल्दी से बच्चों, इस क्वेश्चन में इतना ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, यू गाइस कैन डू दिस प्रॉब्लम वेरी वेरी इजली। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। लेट्स सी हु विल गिव द राइट आंसर फर्स्ट। एक आंसर आना चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में, जितने भी 10 लोग लाइव हैं 10 लोगों का एक आंसर आना चाहिए, और सबका एक आंसर मतलब वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो दीक्षिता ने जवाब दिया है 1.44 माइक्रोमीटर। बाकी पब्लिक क्या बोलती है? बाकी पब्लिक क्या बोल रही है? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं दूंगा मैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? ये क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि सरफेस ओवरफ्लो रेट आपको गिवन है, दैट इज 20,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। काइनेटिक विस्कोसिटी आपको गिवन है 1.01 into 10 to power minus 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे। स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज g is given to you 2.64, acceleration due to g also small g is also given to you, minimum diameter they are asking you। चलिए, तो कहानी में सबसे पहले आपने सिंपल फॉर्मूला जाना होगा कि इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, Vs अपॉन V नॉट इंटू 100। आपसे डायमीटर पूछ रहा है, तो मतलब आपको Vs निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप सबको मालूम है कि फॉर्मूला क्या होता है Vs का, GD स्क्वायर अपॉन 18 न्यू G माइनस 1। तो D वाला पार्ट तो इसी फॉर्मूला में आता है, मतलब ये वाला पार्ट हमको Vs वाला पार्ट निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं बच्चों। तो अगर मैं Vs इक्वल टू लिखूं बच्चों, तो क्या आएगा? इफिशियंसी है 80%, so it will be 0.8 of V naught, that is 20,000 liter, so 20,000 liter that I can change into 20 meter cube, so 20 meter cube per meter square per day। I want to convert this value into per second, so I will divide with 24 into 3600। so how much Vs will come guys? How much Vs will come? देखते हैं सबका आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि सबका आंसर बिल्कुल अलग अलग आ रहा है, जो चीज मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है बच्चों। सबका आंसर एक आना चाहिए। सो Vs की वैल्यू आई मेरी 1.8518 10 to power minus 4। Now you all know formula of Vs is nothing but 1.85 into 10 to power minus 48, ये 18 भी लिख देता हूं, GD square, so G is 9.81 into D square upon 18 into mu। So mu, how much they have given you? They have given you 1.01 into 10 to power minus 2. You have to convert the centimeter square per second into meter square per second. That means you have to multiply with 10 to power minus 4. That means you have to multiply with 10 to power minus 4. So 1.01 into 10 to power minus 6 into G minus 1. So G value is how much? They have given you 2.64 minus 1. It will be 1.64. It will be 1.64. So if you calculate this part, कितनी आएगी आपकी D की वैल्यू?
how much D value you will get. Let's see how much D value you will get. So 1.85A18 into 18 into 1.01 into 10 to power minus 10 upon 9.81 into 1.64. So I'm getting, guys, 1.44 minus 5 meter. That means I can write this as 1.44. If you want to write this part as micrometer, आपको माइक्रोमीटर में आई थिंक पूछ रहा है वो, so क्या करोगे आप, इसको 10 to power 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या बचेगा 1.44 into 10 to power minus 1. So it will be how much? 0.144 micrometer. 0.144 micrometer. Wait. This will be 1, na? This type of mistake we call as PAP. So 14.4 माइक्रोमीटर. अब मैं देखता हूं किन लोगों ने मेरे को सही जवाब दिया था. यश ने मेरे को सही जवाब दिया था. वेरी गुड यश. दीक्षिता, आपने पाप किया. और चलिए, बाकी लोगों ने तो मेरे को सही जवाब दिया ही नहीं. सिर्फ 2 लोगों ने मेरे को सही जवाब दिया था, यश और दीक्षिता ने. और दीक्षिता ने थोड़ा पाप किया है, बट उस पाप का घाटा बहुत ज्यादा है. बिल्कुल गौतम, बिल्कुल सही. 14.4 सही आंसर है. For 14.4 is the right answer, guys. 14.4 is the right answer, guys. ठीक है, कोई डाउट इस बात में गाइस? कोई डाउट इस बात में? रॉ पूछ रहे हैं सर 80% एफिशिएंसी मतलब क्या? 80% एफिशिएंसी मतलब 80% पार्टिकल रिमूव्ड होगा उस सेडिमेंटेशन टैंक में. ठीक है, इसका मतलब क्या है? 80% पार्टिकल आपके उस सेडिमेंटेशन टैंक में रिमूव्ड होगी. और इसका फॉर्मूला मैंने आपको VS अपॉन V नॉट बताया था क्लास में. तो वो फॉर्मूला कैसे आया वो मैं यहां बताने वाला नहीं हूं. उसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछिए. इफ एनीबडी हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग द कंसेप्ट पार्ट, यू कैन आस्क मी, or else we'll go to the next question. So next question is in front of you. Let's see who will give the right answer. शिवम, 4.5 माइक्रोमीटर कैसे आएगा शिवम? क्वेश्चन आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया है. आपको लगता है कोई चेंज होना चाहिए, कुछ बदलना चाहिए तो आप बिल्कुल बताइए. ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए मेरे को. Next question is in front of you, guys. I want answer from all of you as quickly as possible, because this type of problem ना in GATE exam you have to solve it very quickly. So in that case, guys, आपको थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट मूवमेंट करना पड़ेगा. गलतियां होंगी चलो, लेकिन थोड़ा फास्ट करना सीखो अब. और जिन लोगों ने अभी तक प्रेजेंटेशन नहीं डाला है बच्चों, प्रेजेंटेशन डाल दीजिए जल्दी से.
जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइएगा सबका आंसर। क्या मल्टीप्लाई होगा? मैंने तो मल्टीप्लाई किया है, मैंने VSC निकाला है, आपको V नॉट गिवन है ना, आपको V नॉट गिवन है ना 20,000। सो मैंने VSC इक्वल टू वही तो किया है, V नॉट 0.8 इंटू 20, मैंने वही तो किया है। रो जो आपका सवाल था, क्लियर हुआ आपका सवाल? आपका सवाल क्लियर हुआ जो आपका डाउट था? यस पूछ रहे हैं सर, पिन होल 1 महीने से आपका लेक्चर देख रहा हूं रिकॉर्डेड बस। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यश, चलिए वेरी गुड। देखिए मैं जो आपको क्लास में बताता हूँ वैसे क्वेश्चन ये आपको दिख रहे हैं। ये जो क्वेश्चन जो आपको करवा रहा हूँ ना बच्चे, ये सारे क्वेश्चन गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको क्लास में जो पढ़ा है वो सारा का सारा काम आ रहा है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप सारे क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करोगे, सही अटेम्प्ट नहीं, सही अटेम्प्ट। 0.8 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो उसको पाप बोलेंगे लक्ष्मी। वहां मेंशन है कि 0.8 80% इफिशिएंसी है। VS इक्वल टू V नॉट तब लेते थे जब 100% इफिशिएंसी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। चलिए ट्राई कीजिए, जल्दी ट्राई कीजिए, जल्दी में कोई आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी आना चाहिए बच्चों, बहुत जल्दी। ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है एग्जाम में, क्लास में करवाया है ऐसा क्वेश्चन। यस क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन आपको आई थिंक 19 गेट में आया हुआ है। दिस क्वेश्चन केम इन 19 गेट। लेट्स सी हु विल गिव द राइट आंसर फर्स्ट, लेट्स सी हु विल गिव द राइट आंसर फर्स्ट। जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए।
जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन में। सो दीक्षिता का आंसर है बी। लक्ष्मी ए पे बोल रहे हैं बट डाउट में है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैंने करवाया था इसलिए मैं थोड़ा आपको वेट टाइम भी दे रहा हूं कि जिन लोगों ने क्लास किया होगा उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, और जिन लोगों ने इस क्लास को नहीं किया होगा वो लोग से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब समझिएगा क्वेश्चन क्या है। ए वाटर सप्लाई स्कीम ट्रांसपोर्ट 10 mld, मतलब 10 mld ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर थ्रू 450 डायमीटर पाइप फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर। चलिए, a chlorine dose of 3.5 milligram per liter is applied at the starting point of the pipeline to attain a certain level of disinfection, at the downward end. It is decided to increase the flow rate from 10 mld to 13 mld in the pipeline. क्या डिसाइड किया गया कि फ्लो रेट 10 mld से 13 mld किया जाए। Assume exponent of concentration n will be equal to 0.86, मतलब डाइल्यूशन फैक्टर आपको गिवन है n इक्वल टू 0.86 with the increased flow rate. In order to attain the same level of disinfection, the chlorine dose does नहीं होगा, this is chlorine dose to be applied at the starting point should be. अब इस बात में कई चीजें क्लियर हो जाना चाहिए, कई चीजें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको याद है मैंने बताया था कि दो चीजों का खेल होता है डिसइंफेक्शन में। एक होता है आपने कितना कॉन्सेंट्रेशन दिया, दूसरा कितना कॉन्टेक्ट टाइम दिया। दोनों का बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिया है तो आप कॉन्टेक्ट टाइम कम भी दोगे तो चलेगा, अगर आपने कॉन्टेक्ट टाइम ज्यादा दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन आप कम भी दोगे तो चलेगा। सो वी वांट टू मेक ए बैलेंस। इफ यू वांट ए परफेक्ट इफिशियंसी, अब आपको एक अच्छी सी डिजायर्ड इफिशियंसी चाहिए तो आपको इन दोनों चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा। और इसीलिए फॉर ए गिवन इफिशियंसी बच्चों मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला फॉर गिवन इफिशियंसी C to the power n into t will be equal to k। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर आप सबको याद होगा ये फॉर्मूला तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताई थी और इसी फॉर्मूला का यूज करना था। तो जितने लोग अभी जवाब नहीं दिए हैं आप मेरे को तुरंत दे देंगे। C क्या है आपका कॉन्सेंट्रेशन, N क्या है आपका डाइल्यूशन फैक्टर, T क्या है आपका कॉन्टैक्ट टाइम। अब आपको मालूम है कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, आपने क्या किया, देखो पाइप का वॉल्यूम सेम है तो आपने अगर फ्लो रेट बढ़ाओगे तो कॉन्टैक्ट टाइम तो कम मिलने वाला है, कॉन्टैक्ट टाइम तो कम मिलने वाला है। इन दैट केस आपका जो डोज है दैट इज 3.5 मिलीग्राम पर लीटर, उससे तो ज्यादा ही जाने वाला है। ये तो पूरा का पूरा श्योर शॉट है। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्टैक्ट टाइम घटा दिया है तो आपको कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ाना पड़ेगा ही। ये हमारे साथ क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं, अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम को जो आप देखोगे तो आप इस वाले पार्ट को किए तो कांस्टेंट आप क्या लिख सकते हो उसको, C1 to the power n into T1 will be equal to C to the power n into T2. Now C1 they have given you already 3.5 to the power n. T1 they have given or not? T1 they have not given, so you know that time will be equal to what बच्चा, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज आप करके टाइम निकाल सकते हो। तो चलिए हमारे पास वॉल्यूम भी है, हमारे पास डिस्चार्ज भी है, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ बच्चों, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज। सो दैट इज द Q1 पार्ट इक्वल टू C2 you don't know to the n and T2 will be again volume upon Q2. Now here I am writing in detail. If you see this volume guys, पाइप वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, पाइप का तो वॉल्यूम वही रहने वाला है ना, पाइप वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा, तो वॉल्यूम दोनों साइड से मैं कैंसिल आराम से कर सकता हूं। आपके पास C1 की वैल्यू 3.5 है तो वो तो मैंने ले लिया, N की वैल्यू भी गिवन है तो उसको भी लो भैया, उसको बुरा लग जाएगा। सो 3.56 टू द पावर 0.86, ठीक है, इक्वल टू C2 टू द पावर 0.86 into Q1 upon Q2।
So Q1 we have 10 and Q2 we have 30. So 10 upon 30. So C to the power 0.86 will be equal to 13 into 3.56 to the power 0.86 अपॉन 10. सो आप सब लोग मेरे को C2 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए. एवरीवन कैलकुलेट दिस पार्ट. जिन लोगों ने अभी तक आंसर नहीं दिया था, आप सबका काम है जल्दी से वैल्यू निकालिए और बताइए. एंड द वैल्यू विच विल कम इन मिलीग्राम पर लीटर. और जिनको बच्चों डाउट है वो पूछ लो. और सब लोग जिन लोगों ने क्लास किया है, जो लोग मेरा यूट्यूब पे क्लास किया है, वो आप बताना क्या इस टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया था बच्चों आपसे. क्या मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपसे डिस्कस नहीं किया था? क्या इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया था? चलिए जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए आंसर. सबका वही आ रही वैल्यू, सबकी वही वैल्यू आ रही है. सो सबसे पहले तो कैलकुलेट कर लीजिए. 13 इंटू 3.5, 3.5 ही है ना, टू द पावर 0.86 अपॉन 10. So that will be equal to कितनी आई? तो गौतम बता रहे हैं 4.82. मेरी जो वैल्यू आ रही है 4.74 आ रही है बच्चों. मेरी जो वैल्यू आ रही है 74 आ रही है. मेरी जो वैल्यू आ रही है 4.74 आ रही है. तो किसी की वैल्यू आ रही है क्या 4.74? मेरे अलावा किसी और की वैल्यू आ रही है क्या 4.74? अगर मेरे अलावा किसी और की वैल्यू आ रही होगी 4.74, मतलब सही वैल्यू मैंने निकाला, अदरवाइज मैंने कहीं पाप किया होगा. जल्दी बताइएगा बच्चों. जितनी जल्दी बताइएगा उतनी जल्दी आपको नया क्वेश्चन मिल जाएगा. जितनी जल्दी आप लोग बताइएगा उतनी जल्दी आपको नया क्वेश्चन मिल जाएगा. चलिए, तो दीक्षिता ने 4.75 मेरे को जवाब दिया. इसका मतलब क्या हुआ कि आपने, मतलब मैंने सही कैलकुलेशन किया है. चलिए वेरी गुड. सौम्या ने भी 4.74 बता दिया, मतलब मैंने सही कैलकुलेशन किया था. जल्दी से बताइएगा ऐसे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बनाने में मजा आया? कंसेप्ट सीखे. सबसे पहला कंसेप्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा तो टाइम कम होगा, टाइम ज्यादा कॉन्टैक्ट पीरियड ज्यादा तो कंसंट्रेशन कम दोगे तो भी चलेगा. तो इन दोनों का बैलेंस बनाना पड़ता है हमको फॉर ए गिवन एफिशिएंसी. और ये जो C टू द पावर n इंटू टी इक्वल टू के जो फॉर्मूला है ना बच्चों, ये एक गिवन एफिशिएंसी के लिए काम करता है. डिसइंफेक्शन के किसी भी प्रोसेस में काम करता है ये. और ये किस लिए काम करता है? ये कब काम करता है? जब आपकी गिवन इफिशियंसी, मतलब एक ही इफिशियंसी की बात हो, इफिशियंसी चेंज नहीं होना चाहिए. इस बात का ध्यान रखना, इस कंसेप्ट का ध्यान रखना. और क्वेश्चन में आई थिंक कोई डाउट नहीं रहा होगा. अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है. आई डोंट नो वेदर दिस केम इन गेट 2019 और 18, आई डोंट नो, बट दिस क्वेश्चन केम, आई थिंक इट केम इन 19 ओनली. चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा सब लोग, जल्दी से जवाब दीजिएगा. ये तो सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन देखो और जवाब दो, ऐसा वाला है.
जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए। चलिए, सबका जवाब आ चुका है मेरे को। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार पढ़ते हैं। दे आर आस्किंग यू द करेक्ट एक्सप्रेशन, मतलब आपने कहानी पूरी पढ़ी है, बीओडी की कहानी आपको याद है, तो मैं देखता हूं कि मेरे को कौन कौन से ऑप्शन गलत होंगे। सबसे पहले मैं ये पता करता हूं बच्चों। तो ऑप्शन में देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, ये वाला। तो एल टी विल बी इक्वल टू, सबसे पहले तो सी वाला ऑप्शन देखते हैं, एल नॉट इक्वल टू एल टी टू पावर माइनस के टी। सी ऑप्शन गलत। नेक्स्ट ऑप्शन डी भी ऑप्शन गलत है। बीओडी इक्वल टू क्या होता है, एल नॉट माइनस एल टी। इस ऑप्शन को थोड़ा बाद में देखते हैं। ए ऑप्शन पे अगर हम फोकस करें तो एल टी विल बी इक्वल टू एल नॉट वन माइनस ई टू पावर माइनस के टी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो एल टी नहीं होता, वो बीओडी होता है। बीओडी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एल नॉट वन माइनस ई टू पावर माइनस ए के टी। तो जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वो तो बहुत ही बड़ा पाप किया है, आपने बहुत ही बड़ा पाप किया है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्योंकि बीओडी विल बी इक्वल होता है एल नॉट माइनस एल टी। एल नॉट आपका अल्टीमेट बीओडी है, एल टी आपका बीओडी एट दैट टाइम है, और दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको बीओडी रिमूव्ड मिल जाता है। ये चीजें आपको मैंने डेरिवेशन में बताया था, कई बार समझाया था। तो जिन लोगों ने मेरे को ऑप्शन ए दिया है, लक्ष्मी, दीक्षिता, गौतम, सौम्या, शिवम, बहुत ही बड़ी मिस्टेक की है आपने, बहुत ही बड़ी मिस्टेक की है, बहुत ही बड़ा मिस्टेक किया आप लोगों ने। इसको मैं पाप भी नहीं बोलूंगा, इसको महापाप बोलूंगा आप लोगों के लिए। ये महापाप है। जल्दी से, अब क्लियर हो गया। अब किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? एनीबडी हैविंग डाउट? एनीबडी हैविंग मोर डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? एनीबडी हैविंग मोर डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? शिवम बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, देखो समझाता हूं फिर से। मैंने आपको बोला था, जब आपको मैंने डेरिवेशन किया था तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। अब आप भूल गए तो मेरे को उसको फिर से याद दिलाना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बोला था कि जो बीओडी होता है उसका मतलब क्या होता है, बीओडी रिमूव्ड। और बीओडी रिमूव्ड को हम किससे बताते हैं, एल नॉट माइनस एल टी से। अल्टीमेट बीओडी माइनस बीओ, और मतलब अल्टीमेट ऑर्गेनिक मैटर जो आपका है माइनस आपका ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट दैट टाइम, दोनों का डिफरेंस आपको क्या देता है, बीओडी रिमूव्ड। अगर बीओडी रिमेनिंग लिखा हुआ है
तो वो LT के इक्वल होता है। तो ये आपका फॉर्मूला है BOD का। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि BOD 5 इक्वल टू L5 होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। L0 इक्वल टू LT टू पावर e टू पावर माइनस KT होता है, ये भी गलत है। ए ऑप्शन LT इक्वल टू L0 1 माइनस e टू पावर माइनस KT, नहीं, BOD इक्वल टू होता है L0 1 माइनस e टू पावर माइनस KT। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है LT विल बी इक्वल टू क्या होता था, L0 e टू पावर माइनस K इंटू, और इसको जब आप यहां पुट करते थे तो L0 को कॉमन लेते थे, 1 माइनस e टू पावर माइनस K इंटू T रखते थे। तो ये सारा फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया है क्लास में, आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। शिवम, आपका डाउट क्लियर हो गया? शिवम, आपका डाउट क्लियर हो गया बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो आप सब लोग? सो आर यू गाइस रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? आर यू गाइस रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? आर यू गाइस रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं सबसे पहले मेरे को कमेंट सेक्शन में कौन जवाब देता है। लेट्स सी हु विल गिव द राइट आंसर फर्स्ट। दिस टाइम लेट्स सी हु विल गिव द राइट आंसर फर्स्ट। Let's see who will give the right answer first. मेरा कमेंट सेक्शन में ध्यान है और देखता हूं सबसे पहले जवाब कौन सा आता है। लेट्स सी हु विल गिव द राइट आंसर फर्स्ट। अंकुर, पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट है और आप सब लोग को मालूम है कि कल कल नहीं परसों सेकंड को मैं आपका सर्विस रिजर्वायर वाला पार्ट ले रहा हूं। तो आपको टाइमिंग आपको मालूम है, मैंने आपको बता दिया था 2 PM टू 4 PM सर्विस रिजर्वायर की क्लास होगी अनअकैडमी पे, फ्री क्लासेस हैं, सब लोग आइए, उस पार्ट को समझिए। और आपका ऐसे करके जो 2 टॉपिक बच गया था, सर्विस रिजर्वायर और हार्डी क्रॉस मेथड, वो पार्ट में आपको डिस्कस करके आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? चलिए, तब तक इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। तो रॉ ने जवाब दे दिया है 1.414, रॉ ने जवाब दे दिया है 1.414। बाकी पब्लिक क्या दे रही है? जब तक मेरे को 3 लोगों का जवाब नहीं आता मैं आंसर नहीं दूंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से कीजिएगा, जल्दी से कीजिएगा सब लोग। फिर सौम्या का जवाब आ चुका है √2 1.414, 2 लोगों का जवाब आ चुका है, बाकी तीसरा जवाब आएगा और मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तीसरा जवाब आएगा और इसका मैं सॉल्यूशन बता दूंगा।
चलिए, तो शिवम ने तीसरा जवाब दे दिया। अब क्वेश्चन को मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में बच्चों, कुछ भी नहीं है। क्या कर रहे हैं आपको, यहां बोला कंप्लीटली अंडर, मतलब वो कौन सा लोएस्ट डायमीटर है जो कंप्लीटली आपको सेटल हो जाए, मतलब फॉर 100% इफिशियंसी यू नो दैट Vs इज इक्वल टू V नॉट, ये आपको मालूम है। और आपको ये भी मालूम है कि Vs का फॉर्मूला में Vs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ds स्क्वायर होता है, क्योंकि Vs इक्वल टू GD स्क्वायर अपॉन 18 न्यू G माइनस 1, तो मतलब Vs d स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मेरे को बच्चों, अगर मेरे को Vs फॉर फर्स्ट कंडीशन लिखना, मतलब फर्स्ट कंडीशन में 30 वाले कंडीशन के लिए, सो Vs फॉर 30 अपॉन Vs फॉर 50, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, D30 अपॉन D15 का होल स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको मालूम है Vs और V नॉट सेम ही है, तो यहाँ पे आपको दोनों V नॉट की वैल्यू गिवन है, तो मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं D30 अपॉन D15 का होल स्क्वायर बच्चों, that will be equal to 30 upon 50 and that is nothing but equal to 2. So अगर आपसे पूछा जाए कि भैया D50 upon D30 upon D15 कितना होगा, so that will be nothing but root 2 and that will be equal to 1.414. तो सबका जवाब मेरे को आ गया था, सबका जवाब आ गया था मेरे को, यस और नो। चलिए चलिए, वेरी गुड अनिश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले कौन देता है, देखते हैं। Who will give the right answer first for the next question? Who will give the right answer first for the next question? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब जो देगा मजा आ जाएगा। रिएक्शन नहीं पता, अरे भैया सिंपल रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है। जिनको रिएक्शन नहीं पता नोट कर लो, कोई भी रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ही नहीं। C8H16O6 आपको रिएक्ट करवाना है इसको ऑक्सीजन से, तो चलो भैया ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं। बनाना क्या है आपको, बनाना तो CO2 ही है आपको। तो आपके पास देखो यहाँ 8 है, तो यहाँ भी 8 रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करो आप, यहाँ पे 8 ले लो, कहानी बन गया आपके पास। मेन कहानी आ गया, क्योंकि आपको तो बात करना है ऑक्सीजन की, आपको तो बात करना है ऑक्सीजन की। अगर आप पूरा रिएक्शन भी लिखना चाहें तो उसके बाद क्या बचता है आपके पास, 16। सो आपके पास कितना बच गया, 8H2O बच गया। सो 8 2 16 हो गया, और 8O और इधर 8O दोनों सेम हो गए क्या। सो इधर हो गया आपके पास 14, 16 प्लस 6 तो कितने हो गए 22, और इधर आपके पास है 16 प्लस 8, ज्यादा हो गया, वैल्यू ज्यादा आ गई क्या, O में कहीं बैलेंस है क्या। अच्छा अच्छा, यहाँ O8 गिवन है ना, चलिए अब बैलेंस हो जाएगा। सो 8 प्लस 16 आपको हो गया 24, और इधर भी 24। चलिए, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया, आपको लिखने के बता दिया इक्वेशन। अब आपको आंसर आ जाना चाहिए।
अब आपको आंसर आ जाना चाहिए। अब आपको आंसर आ जाना चाहिए। चलिए, तो रॉ आपको मैंने बता दिया। अनीश हेलो, आपका कोई डाउट है तो पूछिए अनीश, और अगर डाउट नहीं है तो जवाब दीजिए मेरे को इस क्वेश्चन का। आगे आप सारे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, तो एकदम जागते रहिए और क्वेश्चन बनाते रहिए फटाफट। जितनी जल्दी क्वेश्चन बना के आप लोग खत्म कर दोगे उतनी जल्दी क्लास आपकी खत्म भी हो जाएगी। तो एकदम फटाफट बनाओ, फटाफट बनाओ, फटाफट आंसर दो, मजा आ जाएगा ऐसा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको 1 मोल ऑफ C8H16 और O8 जो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो 1 मोल होता है, तो वो आपको 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेता है, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेता है। तो यहाँ आपका 10⁻³ मोल पर लीटर है, तो ऑक्सीजन कितना लेगा आप डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हो, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक मार्क्स का क्वेश्चन बोलूंगा मैं, वैसे ये 2 मार्क्स के लिए आया था, बट एक्चुअली दिस क्वेश्चन डिजर्व ओनली 1 मार्क्स। चलिए, तो जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए, जवाब दीजिए जल्दी से। तो मेरे को आया है 2 जवाब आया है, एक 256 ग्राम का आया है और रॉ ने जवाब दिया है 2.048 ग्राम पर लीटर। देखते हैं कि इनका जवाब सही है। तो देखिए भैया, हमारे रिएक्शन अगर आप देखिएगा तो आपको 1 मोल ऑर्गेनिक मैटर के लिए आपको कितना चाहिए, 8 चाहिए आपको ये ऑक्सीजन। मतलब फॉर वन मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यू नीड 8 मोल ऑफ O2। तो यहाँ पे कितनी है, 10⁻³ मोल पर लीटर, तो उसके लिए कितनी हो जाएगी, 10⁻³ मोल of O2. Now they are asking you in gram of O2 per liter. They are asking you in gram. So you know that 1 मोल of O2 में कितना ग्राम होता है, 1 मोल मतलब कितना हो गया O2, O2 मतलब 32, so 32 कितनी वैल्यू आएगी बताइए, कितनी वैल्यू आएगी, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए। 8 into 10⁻³ into 32 0.256 ग्राम। ग्राम। क्लियर है बच्चों? अगर मिलीग्राम में पूछता तो ये 256 मिलीग्राम हो जाता, लेकिन यहां ग्राम में पूछा है तो 0.256 ग्राम, 0.256 ग्राम। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट इस पार्ट में? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? एनीबडी हैविंग एनी डाउट दे कैन आस्क मी। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है। लेट्स सी हु विल गिव द राइट आंसर फर्स्ट। लेट्स सी हु विल गिव द राइट आंसर।
जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। जितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा उतनी जल्दी आपके आज का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आ जाएगा। जितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा उसके बाद आपके आज का लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा, जो सबसे मजेदार क्वेश्चन होगा वो आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब जितनी जल्दी दीजिएगा उतना ज्यादा मजा आएगा। जल्दी से जल्दी 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 से एकदम जल्दी, बहुत जल्दी जवाब देना है। विद इन 2 मिनट सबका आंसर दिख जाना चाहिए, विद इन 2 मिनट सबका कमेंट में आंसर दिख जाना चाहिए। लक्ष्मी आज 12 बजे तक नहीं है, आप क्या चाहते हो? मैं कल भी आप लोग के साथ में 12 बजे रात तक रहा ही था। हर दिन अगर आप लोग मेरे साथ रहोगे तो फिर पापा मम्मी बोलेंगे बहुत ज्यादा पढ़ाई हो रही है, थोड़ी कम पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए आज आपकी क्लास थोड़ी पहले छूट जाएगी। और सच बात यह है कि बहुत ही ज्यादा थक गया हूं बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा सा अर्ली छोड़ रहा हूं। कोई बात नहीं, हम फिर से क्वेश्चन करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक आप लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं हो। आप लोग पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट आए पूछते रहिए और फटाफट पहले मेरे को इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए सबसे पहले। तो रॉ ने जवाब दे दिया है, दीक्षिता ने जवाब दे दिया है। ठीक है शिवम, देखते हैं जहां तक पॉसिबल होगा वहां तक खींचता हूं मैं। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम लोग कॉन्सेंट्रेशन। आपको किसका पूछ रहा है? ये एल्कलिटी पूछ रहा है। तो एल्कलिटी का फॉर्मूला ऊपर आपको गिवन है इक्विवेलेंट का, वो आपको मेंशन है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भैया आप क्या करो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस को नेग्लेक्ट करो और H प्लस को भी नेग्लेक्ट करो। चलो ठीक है, नेग्लेक्ट कर दिया। तो बचा कौन आपका? बचा SCO3 और 2CO3 माइनस। ओके, और आपको पूछ रहा है ये CaCO3 में। चलिए, तो आपके पास क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपके पास फटाफट कीजिए क्या आप, एल्कलिटी SCO3 कितनी है? 2 इंटू 10⁻³ ये आपको इक्विवेलेंट पर लीटर में गिवन ही है, तो आप डायरेक्टली मोल पर लीटर लिख रही हो यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको चेंज कर दो। तो 50 से डिवाइड कर दिया आपने, 50 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। 50 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 50 होता है, ये आपको मालूम है। अगर जिनको ये बात से प्रॉब्लम हो रही है तो उसको मैं एक एक पार्ट स्टेप वाइज कर देता हूं ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। पहली बात बच्चों देखिए, यहाँ पे 2 इंटू 10⁻³ किसमें है? मोल पर लीटर में। आई हैव टू कन्वर्ट दिस पार्ट इनटू इक्विवेलेंट पर लीटर। तो मतलब पहले इसको मोल को ग्राम में कन्वर्ट करो, तो मतलब क्या होगा, SCO3 61 अपॉन डिवाइड बाय, आपको मालूम है कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ SCO3? नथिंग बट 61 ओनली। 61 कैंसिल हो गया। अब जो इक्विवेलेंट पर लीटर आया उसको आपने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका पूरा पार्ट किसके लिए हुआ? SCO3 के लिए। अब सिमिलरली मैं कर रहा हूं बच्चों CO3 के लिए। तो CO3 के लिए करोगे तो कितनी आएगी वैल्यू? 3.04 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2 इंटू आपने तो कर ही दिया है और इंटू 50। कितनी आ रही वैल्यू? हाउ मच वैल्यू आर गेटिंग? जल्दी बताइएगा, वैल्यू कितनी आ रही है सबकी?
So 2 into 10 to power minus 3 into 50 plus कितनी आ रही वैल्यू, कितनी आ रही बच्चों? आपको मिलीग्राम पर लीटर में निकालना है, उस बात का ध्यान रखिएगा। तो 130.04 आ रहा है मेरा वैल्यू, 130.4 और उसके साथ आप मिलीग्राम पर लीटर रख सकते हैं। सो 130.04 कितनों की वैल्यू आ रही है? रॉ की आ रही थी, दीक्षिता की आ रही थी, लक्ष्मी की आ रही थी, इन तीनों की वैल्यू आ रही थी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? इस प्रॉब्लम में कोई डाउट? इस प्रॉब्लम में कोई डाउट बच्चों? 0.134 आएगा, वो ग्राम में आ रहा है, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया 130.4 जो आपका, उसको मैंने मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपको ऑप्शन में मिलीग्राम पर लीटर में गिवन है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही आपको वैल्यू रखी। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है बच्चों? चलिए, अगर ये बात क्लियर हो गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रॉ और दीक्षिता कुछ पूछ रहे हैं, नो सर बोल रहे हैं, तो ये किस लिए नो सर बोल रहे हैं? डाउट है उसके लिए कुछ नो सर बता रहे हैं, या फिर डाउट नहीं है उसके लिए? कंफ्यूज हो गया हूं मैं, तो आप क्लियर कर दो। और जो लोग को क्लियर हो चुका है पिछले वाला क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है, और मैंने बताया इस क्वेश्चन के लिए कुछ भी इन्वायरमेंट के कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट लगाओगे बन जाएगा। इन्वायरमेंट के 70% क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। अगर आपको यूनिट पे कमांड है, यूनिट पता है हर चीजों का, अच्छे से कन्वर्जन करना जानते हो, 70% of the numerical problem you will solve very easily. I'm telling you this I'm telling you from my experience. 70% प्रॉब्लम बहुत आसानी से बन जाते हैं इन्वायरमेंट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अगर आपको कन्वर्जन अच्छे से आता हो, अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा हो, आपने बेसिक एप्टीट्यूड लगाया हो, और एप्टीट्यूड तो रहेगा भैया, गेट का नाम में ही एप्टीट्यूड है, तो वो तो रहेगा ही। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आराम से दीजिए, बिल्कुल आराम से दीजिए, और बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, एक जवाब लेकिन सही जवाब। चलिए, जल्दी से क्वेश्चन बनाइएगा, जल्दी से क्वेश्चन बनाइएगा। हाय जितेंद्र, यू आर वेरी लेट, बहुत ही लेट हो आप, बट नो प्रॉब्लम, यू कैन गिव ए ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन, यू कैन गिव ए ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं अभी जितने लोग लाइव हैं उसमें से कितने लोग मेरे को इस कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं मेरे को। वैसे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा ही आपके लिए, बट अगर आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब पहले देंगे तो मेरे को ज्यादा मजा आएगा।
लास्ट वाले क्वेश्चन में 2 मल्टीप्लाई किया है ना, आप देख सकते हो मैंने 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है। वहां जो आपको ब्रैकेट है वो डायरेक्टली मोल पर लीटर में ही बता रहा है, तो आप कन्वर्ट नहीं भी करोगे ना तो भी काम हो जाएगा। डायरेक्टली 2 इंटू 10⁻³ इंटू 50 प्लस 2 इंटू 3.04 इंटू 10⁻⁴ इंटू 50। OH माइनस वाला पार्ट और H प्लस वाला पार्ट दोनों को नेगलेक्ट किया गया है। ये लक्ष्मी आपका डाउट तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया। चलिए जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। Hi Nikki, you are late, but no problem. You can give a try for this question. और जो लोग नए ज्वाइन किए हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चलिए जल्दी जवाब, जल्दी से जवाब दीजिएगा सब लोग। थैंक यू स्नेहल। चलिए जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दिए सब लोग। आई होप यू गाइस आर ट्राइंग। क्वेश्चन का पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना, क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन का लाइन बाय लाइन पढ़ा बच्चों तो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ा तो क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, ये मेरी गारंटी है। रॉ बोल रहे हैं नहीं आता। चलिए अगर नहीं आता तो फिर इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। चलिए तो क्वेश्चन को बनाते हैं बच्चों, साथ में बनाइए। जो लोग ट्राई कर रहे हैं अच्छी बात है। तो दीक्षिता का जवाब आ चुका है 1138.98 टन पर डे। वेरी गुड दीक्षिता, वेरी गुड। आपने ट्राई किया और आंसर भी दिया। आई होप आंसर आपका सही जाए, मेरे को बहुत खुशी होगी। चलिए तो क्वेश्चन को थोड़ा करते हैं। फ्रेश पेज लिया जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि आउट ऑफ 1000 टन पर डे कार्बन कितना होगा 35%, मतलब 350 टन पर डे। तो वो कितना आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा उसका, तो निकाल लेते हैं भैया। फॉर्मूला आपको मालूम है, C प्लस O2 विल गिव यू CO2, मतलब 12 ग्राम आपको कार्बन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेता है और फिर 44 ग्राम आपको CO2 देता है। मतलब फॉर 12 ग्राम ऑफ carbon 32 gram of oxygen is required, no doubt in this. So for carbon guys, for carbon oxygen required कितना होगा, O2 required will be what, 32 upon 12 into 350 ton, 350 ton, because 1000 ton आपका टोटल है, इन दैट 35% आपका कार्बन है। तो कितनी वैल्यू आएगी,
कितनी वैल्यू आएगी बच्चों? साथ में करते जाइएगा, सब लोग साथ में करते जाइएगा, अदरवाइज आप लोग भूल जाते हैं। मैं स्लो जा रहा हूं बच्चों, तो आप सब लोग साथ में करते जाइएगा कैलकुलेशन। हाथ में कैलकुलेटर रखिए और करते जाइए कैलकुलेशन। सो ये आ गया आपको 933.34 टन पर डे। दूसरा क्या है? दूसरा है हाइड्रोजन। अब सबको मालूम है कि हाइड्रोजन क्या है। अगर 4H हाइड्रोजन है और वो O2 से भिड़ेगा तो क्या बनाएगा? 2H2O। तो मतलब 4 को कितना लगा? 32 लगा। तो अभी आपके पास हाइड्रोजन के लिए कितना O2 रिक्वायर्ड हो जाएगा? O2 required will be what? 32/4 into हाइड्रोजन कितना है? 10%. So 10% is that is nothing but 10% of 1000 will be nothing but 100. So मतलब कितना हो गया बच्चों? 800 टन पर डे। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी? नेक्स्ट रिएक्शन होगी सल्फर के साथ। सो S plus O2 will give you SO2. That means 32 gram of sulfur will react with 32 gram of oxygen and that will give you 64 gram. So in that case O2 required will be 32/32 into how much sulfur is there? 6. So 6% of 1000 will be nothing but 60 if I'm not wrong. So multiply by 60 you will get 60 ton per day. नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्या बचा आपके पास? नाइट्रोजन। मैं अभी थोड़ा कमेंट सेक्शन नहीं देख रहा हूं तो आप सब लोग मेरे साथ कर रहे हैं, मैं यही एज्यूम कर रहा हूं। सो नाइट्रोजन हो गया 14 ग्राम, ऑक्सीजन हो गया 32। सो इनके लिए O2 रिक्वायर्ड कितनी हो गई? 32/14 इंटू नाइट्रोजन कितना है? 3%। 3% ऑफ 1000 विल बी नथिंग बट 30। सो कितनी आएगी वैल्यू? 32 डिवाइड बाय 14 into 30. It will be 68.57. सो कैलकुलेट कर लीजिए कितनी होगी, टोटल वैल्यू कितनी हो रही है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड की। टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बताइएगा कितना होगा बच्चों? टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना होगा? सबको ऐड कीजिए। 993, 860 और ये 68.57 सबको ऐड करके बताइए कितनी आ रही है वैल्यू। सबको ऐड करके बताइएगा कितनी आ रही है वैल्यू। ओके साई, आपको लास्ट क्वेश्चन में फिर से बता दूंगा, अभी पहले मेरे को सारी वैल्यू का सम बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। कितनी आ रही है सम? कितनी आ रही है बच्चों? कार्बन ले लिया हमने, हाइड्रोजन ले लिया, सल्फर ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, सारी चीजों को हमने ले लिया है। कोई चीज छूटा नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए आप सब लोग। एज ऑफ माई इंफॉर्मेशन कुछ भी छूटा नहीं है। चलिए तो सम करके आप लोग बता रहे हो 1861। सो 1861 ton per day. Now if you see this guys, some part of oxygen is already present. Some part of oxygen is already present here. So out of 1000 ton 26% is already present, मतलब 260 टन आपको ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो एक्चुअली आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना हुआ? एक्चुअल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना हो गया? 861 माइनस 260 टन। सो 260 टन कितनी आ रही है वैल्यू? सो इट विल बी 1861 minus 260, it will be 1601 1601 टन पर डे। 1601 टन पर डे। क्लियर है?
अब इतना टन आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, बट यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि ऑक्सीजन इन एयर, क्योंकि हम ऑक्सीजन डायरेक्ट तो सप्लाई नहीं कर सकते ना, हम इन अ फॉर्म ऑफ एयर सप्लाई कर रहे हैं। और आपको क्वेश्चन भी क्या पूछा है, द थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ एयर इन टन पर डे रिक्वायर्ड, पर डे कितना रिक्वायर्ड है इन टन पूछ रहा है आपसे। सो आपको एयर पूछ रहा है, आपको मालूम है कि ऑक्सीजन इन एयर इज नथिंग बट ओनली 23%। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू से, इस वैल्यू जो भी आ रही है आपको, अगर यहां से अमाउंट ऑफ एयर पूछा तो आपको इस वैल्यू को 0.23 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जितनी भी वैल्यू आएगी बच्चों, दैट विल बी योर आंसर। 0.23 से डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स 6960.86 टन पर डे, दैट विल बी योर आंसर गाइस, दैट विल बी योर आंसर। तो अब इस क्वेश्चन में किसको क्या पार्ट समझ में नहीं आया, मैंने आपको पूरा अप्रोच बताया बच्चों, क्या पार्ट आपको समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हो। आई एम गोइंग टू द, आई एम शोइंग यू द बैक पार्ट, आई एम शोइंग यू द प्रीवियस स्लाइड। Anybody having any doubt regarding this part, they can ask me. Anybody having any doubt regarding this part, they can ask me. और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, अपना प्रेजेंटेशन शो नहीं किया है, जल्दी से प्रेजेंटेशन शो कर दीजिए बच्चों, जल्दी से प्रेजेंटेशन शो कर दिए। ऐसे क्वेश्चन में ना बता रहा हूं, सिर्फ ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। जितना बड़ा क्वेश्चन लगता है ना, उतना ही आसान और इजी है क्वेश्चन। क्या है, बस दिमाग कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो इसमें कोई इन्वायरमेंट का कंसेप्ट ही यूज नहीं हो रहा है। देयर इज नो सच कंसेप्ट लाइक दिस, जो आपको आप पढ़ रहे हो ना, कुछ भी कंसेप्ट ही नहीं इसमें इन्वायरमेंट। एक भी कंसेप्ट होता तो मैं बताता। चलिए, तो सब लोगों का आंसर आ गया है 6960। लक्ष्मी पूछ रहे हैं रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन लक्ष्मी? ये सारा बेसिक रिएक्शन है कि कार्बन ऑक्सीजन से मिलता है तो CO2 मिलता है, हाइड्रोजन O2 से मिलता है तो H2O मिलता है, सल्फर O2 से मिलता है तो SO2 मिलता है, नाइट्रोजन O2 से मिलता है तो NO2 मिलता है। ये सारे बेसिक रिएक्शन है। रिवाइज द आंसर से एक मतलब मैं समझा नहीं। आप आंसर वाले पार्ट को या कंप्लीट सॉल्यूशन को रिवाइज करने बोल रहे हो? आप आंसर वाले पार्ट को रिवाइज करने बोल रहे हो या कंप्लीट सॉल्यूशन वाले पार्ट को? क्लियर है बच्चों? क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा सब लोग। एवरीवन सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से कीजिएगा, जितनी जल्दी आप लोग कीजिएगा उतनी जल्दी आपकी क्लास खत्म होगी आज की। कंप्लीट सॉल्यूशन रिवाइज करवाना है। चलिए, तो आप बाकी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए इस क्वेश्चन को और बनाइए इस क्वेश्चन को। अभिषेक का मैं डाउट तब तक क्लियर कर देता हूं। तो अभिषेक, इस क्वेश्चन में क्या था कि आपने 1000 टन पर डे आपको बर्न करना है, जिसमें कार्बन 35% है, ऑक्सीजन 26% है, हाइड्रोजन 10% है, सल्फर 6, नाइट्रोजन 3 और बाकी इनर्ट मटेरियल है। तो आपसे पूछ रहा है कि आपको कितना एयर रिक्वायर्ड होगा, जबकि एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज 23% है। चलिए, और यहाँ पे नीचे ये भी लिख दिया है कि एज्यूम कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ कार्बन, मतलब जितना कार्बन है वो पूरा CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, जितना हाइड्रोजन है वो पूरा H2O में कन्वर्ट हो रहा है, जितना सल्फर है वो पूरा SO2 में कन्वर्ट हो रहा है, जितना नाइट्रोजन है वो पूरा NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपको गिवन है। तो मैं पहले क्या निकाल रहा हूं, कार्बन की बात। तो कार्बन में अगर आप देखो कि C+O2 आपका क्या बनता है, CO2, दैट मीन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज कंबाइनिंग विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू 44 ग्राम ऑफ CO2। तो अगर मेरे को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड करना हो तो मैं देख सकता हूं कि 32/12 कर लो तो मेरे को 1 यूनिट कार्बन के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे 350 है हमारे पास, 350 है ना, तो 350 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू आ गई आपको 933.34 टन पर डे, दिस मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड
to deal with 350 ton per day of carbon. Similarly, we have calculated for hydrogen. Similarly, we have calculated for sulfur as well as nitrogen. Then we have combined these all things. तो जो हमको वैल्यू आई कितनी आई आप सब लोगों ने बताया मेरे को 1861 इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप लोगों ने ये वैल्यू मेरे को बताई है। और उसमें आपको ये मालूम है कि यहाँ पे पहले से भी कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपके वेस्ट में। कितना है 26%, दैट मीन्स 260 टन पर डे। तो मैंने वो 260 टन पर डे माइनस कर दिया, बचा क्या 1601 टन per day. This much amount of actual oxygen is required. Now you know that in air only 23% of oxygen is there. So what I have done to find out amount of air, I have divided that value with 0.23, and the value which you got, that is the amount of air required to fulfill or to go for the proper burning. Proper burning के लिए जितनी required है उतनी आपने amount of air निकाल दी। तो ये अभिषेक मैंने आपके लिए कंप्लीट सोल्यूशन को रिवाइज करवा दिया और लास्ट क्वेश्चन को मैं फिर से आपको शो कर रहा हूं और आई वांट आंसर गाइस, आई वांट आंसर। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, मजा आ जाएगा। जिन लोगों ने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल वाले लेक्चर में भी मिले हैं। जिनको प्लग फ्लो रिएक्टर्स, कंप्लीट मिक्स रिएक्टर वाला, इससे ये सारा जो पार्ट है आपको नहीं देखे हो तो आप बिल्कुल से देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ डाउट आए तो पूछ भी लीजिएगा, कोई बात नहीं है। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो इट्स ओके, इट हैपेंस सम टाइम, आप मेरे से पूछ लीजिएगा दोबारा, नो प्रॉब्लम। क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक एक पार्ट इसमें निकालते जाइएगा, एक एक पार्ट इसमें निकालते जाइएगा। इस क्वेश्चन का आप सबको जवाब देना है। इस क्वेश्चन का मैंने आपको कई बार एएसपी के क्वेश्चन करवाए हैं, तो जिनको एएसपी का फंडा याद होगा, कहानी याद होगी, वो फटाक से मेरे को आंसर देंगे। जिनको कहानी याद नहीं होगी, स्टोरी भूल चुके होंगे, वो फंसे हुए रहेंगे। और मैं देख रहा हूं आप सब लोग एक्सप्रेसिव नहीं हो, आपको कैसा क्लास लगा, कैसी चीजें लगी, क्या इंप्रूवमेंट, ये सारी चीजें आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में नहीं बताते हो। तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताया कीजिए। उससे देखो, अगर आप अच्छी कमेंट करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट आपको लाने के लिए। और अगर कुछ आप सजेशन देते हो तो उस पर हम वर्क करेंगे या नहीं, ये हमको पता चलता है। तो सारे सजेशन पे हम वर्क तो नहीं करेंगे डेफिनेटली, बट दो सजेशन विच आर गुड, जो आपके बेनिफिट के लिए होगा, मैं डेफिनेटली उस पर वर्क करूंगा। तो आप सब लोग एक्सप्रेसिव बनिए, जो चीजें पढ़ रहे हो उसको एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत कम कमेंट देखता हूं आपके, इनमें मैं इन्वायरमेंट के भी कमेंट्स देख रहा था, बहुत सारे बच्चों ने देखा है, लेकिन कमेंट्स करने में कम बच्चे हैं। बच्चों, कमेंट्स करने में कुछ नहीं जाता, उससे उल्टा मेरे को एक पता चलता है कि आपको कितना समझ में आया, और वो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन होता है। सो कमेंट करना, ये चीजें कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल अपने एक्सप्रेशन को बताइए, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, बिल्कुल बताइए, ठीक है। चलिए, चलिए क्वेश्चन का एक एक पार्ट में डिस्कस करूंगा, एक एक पार्ट में करके डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट पार्ट डिस्कस करता हूं बच्चों। फर्स्ट पार्ट डिस्कस में कर रहा हूं, वो है आपका क्या है, एडिएशन पीरियड। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन क्यू। सो dt विल बी व्हाट, वॉल्यूम कितनी है आपको गिवन, 30 इंटू 14 इंटू 4.3। सो 30 इंटू 14 इंटू 4.3 अपॉन क्यू। क्यू आपको कितनी गिवन है, 0.0796, दैट इज अ फ्लो रेट।
0.0796. So whatever value you will get that will be in second. तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको 60 into 60 से डिवाइड कर देता हूं ताकि आपकी वैल्यू आवर्स में आए. तो कितनी वैल्यू आ रही है, कितनी वैल्यू आ रही है आप सबके, मैं कमेंट में आंसर चेक कर रहा हूं, तो आप सब लोग मेरे को कमेंट में आंसर बताते जाइएगा. सिक्स 6.3 आवर्स. चलिए दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दूसरा पार्ट बोल रहा है आपसे F/M रेशियो, मतलब फूड बाय मास रेशियो. मेरे से कोई टेलीग्राम चैनल पे आई थिंक मैं डिस्कशन में रिप्लाई नहीं कर पाया, बट टेलीग्राम चैनल पे कई लोगों का डिस्कशन चल रहा था, सर फूड बीओडी, अब याद रखिएगा फूड बीओडी ऑर्गेनिक मैटर ऑल आर सेम हियर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एम बायोमास ऑल आर सेम हियर, ये बात का ध्यान रखिएगा. तो मैं कभी फूड बोलूंगा, कभी मैं ऑर्गेनिक मैटर बोलूंगा, कभी मैं बीओडी बोलूंगा, मतलब एक ही है. इस बात का आई थिंक टेलीग्राम या कहीं पे आप डिस्कशन कर रहे थे मेरे से. So Q into YI upon VX. Q वाला पार्ट कहां है बच्चों, Q वाला पार्ट मेरे को चाहिए मीटर क्यूब पर डे में भैया, क्योंकि मेरा F की वैल्यू क्या है, मीटर क्यूब पर डे में. तो मैं मीटर क्यूब पर डे में कैसे करूंगा, 0.0796 इंटू 60 कर दूंगा. तो अब ये वैल्यू कितनी आ गई, और उसके साथ ही मैं क्या करूंगा 24 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा. तो ये वैल्यू मेरे को मीटर क्यूब पर डे में आ गई. YI की वैल्यू डेफिनेटली गिवन होगी, कितनी गिवन है, सॉल्युबल BOD 5 आफ्टर PST, आफ्टर PST कितनी है 130. चलिए तो चुपचाप 130 ले लेते हैं. वॉल्यूम आपको मालूम है 13 इंटू 14 इंटू 4.3 इंटू, अब यहाँ x क्या लें, यही वाला प्रॉब्लम आता है, क्योंकि यहाँ पे MLVSS भी गिवन है, MLSS गिवन है. तो मैंने सारे बच्चों को बताया था कि भैया जब दोनों वैल्यू गिवन हो और आपको F/M निकालना हो, क्योंकि F/M इफिशियंसी गवर्न करता है, तो आपको चुपचाप MLVSS को लेना है, MLVSS को लेना है. लेकिन अगर प्रॉब्लम में MLVSS नहीं गिवन हो तो खुद का दिमाग मत लगाना कि सर 80, जनरली तो 80% क्या होता है आपका, 80% ऑफ MLSS इज इक्वल टू MLVSS, ऐसा वाला दिमाग मत लगाना और MLSS को ही लेना. तो यहाँ तो गिवन है तो यहाँ हम MLVSS ही लेंगे. तो आंसर में आपने यहाँ पे क्या डाला 1500. तो जल्दी से आंसर बता दिए सब लोग भैया, आंसर कितनी आई आपकी, F/M की आंसर कितनी आई. चलिए तो मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, 0.0796 इंटू 3600 इंटू 24 इंटू 130 अपॉन 13 इंटू 14 इंटू 4.3 इंटू 1500, 0.33. मेरे को किसी ने भी, मैं आंसर देख रहा हूं, दीक्षिता ने सही जवाब दिया था क्योंकि उन्होंने यूनिट के साथ दिया है जवाब, शिवम ने सही जवाब दिया, बाकी किसी ने भी मेरे को विथ यूनिट जवाब नहीं दिया. चलिए नाउ आई एम गोइंग टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स. अब स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का आपको फॉर्मूला मालूम है बच्चों, क्या होता है कि एक ग्राम MLSS के लिए कितना ml रिक्वायर्ड होगा. तो यहाँ पे आपको दिखा है कि 30 मिनट सेटल किया तो आपको 230 ml आ रहा है, 230 ml वॉल्यूम आ रहा है इन 1 लीटर. अब एक 1 लीटर में आपको MLSS कितने हैं, 2100 मिलीग्राम. आई वांट टू कन्वर्ट दिस पार्ट इनटू ग्राम. So 2100 मिलीग्राम विल बी कन्वर्टेड इनटू 2.1 ग्राम. सो मतलब 1 ग्राम के लिए हमको कितना आएगा वैल्यू, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आपको अगर डेफिनेशन याद है तो कुछ भी नहीं लगा होगा, 230 अपॉन 2.1. सबका आंसर भी आ गया होगा जल्दी से. सो 230 अपॉन 2.1, आंसर कितना हो गया बच्चों, 10952 ml पर ग्राम, ml पर ग्राम. किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए. चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. नेक्स्ट क्या आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू रिटर्न स्लज रेट, रिटर्न स्लज रेट, तो मतलब आपसे वो क्यू आर पूछ रहे हैं। तो पहले तो क्यू आर अपॉन क्यू निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन एक्स यू माइनस एक्स। तो एक्स कितना है 2100, सो 2100 अपॉन 9100 माइनस 2100 कितनी आएगी वैल्यू, कितनी वैल्यू आएगी बच्चों, क्यू आर विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 21 अपॉन 70, सो 0.0796 इंटू 3/10। देखते हैं वैल्यू, आप लोग बताइए कितनी आ रही है, और आप सब में से कितनी को वैल्यू सही आ रही थी मैं वो देखूंगा। सो 0.076 इंटू, सॉरी 0.0796 है, जीरो पॉइंट 0796 है इंटू 0.3, वैल्यू आई 0.02388, 0.02388 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, यस और नो, क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, यस और नो। ये था आपके आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, बाकी हम क्लास में मिलते रहेंगे और आपके डाउट्स जो है आप बिल्कुल मेरे से पूछते रहिए। आप सबको नंबर मालूम ही है मेरा, इवन आप टेलीग्राम फेसबुक जहां भी कनेक्टेड हो मेरे से, आप बिल्कुल फेसबुक पे या आप इंस्टा पे जहां भी कनेक्टेड हो आप डाउट पूछ सकते हो आराम से, और बाकी मिलते रहेंगे। क्वेश्चन बनाते रहिए, क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस देता है। जैसे अभी आपको मैंने क्वेश्चन करवाए, अगर आपने मेरा कल और आज वाला सेशन किया होगा और आप लोगों ने क्वेश्चन बनाया होगा तो आपको एक अच्छी कॉन्फिडेंस आई होगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन गेट के क्वेश्चन है, और जब आप क्वेश्चन बनाते हो ना तो कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होता है। एग्जाम में दो चीजों को, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में दो चीजों का बहुत रोल होता है बच्चों, एक कंसेप्ट और दूसरा कैलकुलेशन, कॉन्फिडेंस। कंसेप्ट देना हमारा काम है, वो मैं दे रहा हूं या हर एक फैकल्टी दे रहा है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना वो आपका काम है। वो कैसे आएगा, ज्यादा प्रॉब्लम से, ज्यादा रिवीजन करने से। सो एज मच एज यू आर गिविंग द रिवीजन पार्ट, जितना रिवीजन कर रहे हो, जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, ये सारी चीजों आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा, और वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो विद दैट गाइस, सौम्या बोल रहे हैं कि हर वीक एक इन्वायरमेंट का रिवीजन सेशन रखिए। चलिए सौम्या, आपकी बात कंसीडर की गई। दीक्षा पूछ रहे हैं सर रिटर्न स्लज रेट में एमएलवीएसएस क्यों नहीं लेते, एमएलवीएसएस का वहां पे लेते हैं, टेलीग्राम चैनल आपको मालूम है अरनीश, आप एफबी के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू आप मेरे को डाउट पूछ सकते हो। और सौम्य आपका डाउट ले लिया गया। दीक्षा का जो डाउट था कि सर एमएलवीएसएस हम क्यों नहीं ले रहे, तो ना हम स्लज एज में एमएलवीएसएस लेते हैं और ना हम रिटर्न स्लज फ्लो रेट में लेते हैं, क्योंकि रिटर्न स्लज फ्लो रेट में जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो कि स्लज वाला पार्ट कितना है, वहां हम एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं करना चाह रहे। एफ बाय एम में हम एमएलवीएसएस को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि एफ बाय एम हमारे इफिशियंसी को डायरेक्टली हिट करता है। और इसीलिए देखो, एमएलवीएसएस और एमएलएसएस में फर्क क्या है, फर्क इतना ही है कि अगर 100 बच्चे रहते हैं क्लास में, तो उसमें काम करने वाले बच्चे, लाइक आपने कॉलेज का प्रोजेक्ट वर्क किया होगा ना, तो 5 में काम करने वाले 3 ही रहते हैं, 2 लोग तो सिर्फ सेमिनार वाले दिन आते हैं। तो आपको जब तक नहीं मालूम है तब तक तो आप 5 ही बोलते हो, लेकिन अगर किसी ने बोला फोकस करके भैया कितने लोग काम कर रहे थे एक्चुअली, तब बताते हो नहीं सर 3 लोग ही काम कर रहे थे। तो एमएलवीएसएस वही है कि आउट ऑफ टोटल 100 बैक्टीरिया
अगर 100 mlss है आपका, तो उसमें सिर्फ 80% बैक्टीरिया ऑन एन एवरेज जो काम करते हैं, बाकी 20% बैक्टीरिया क्या रखते हैं, आराम करते हैं। तो उन बैक्टीरिया को इफिशियंसी वाले पार्ट में लेने से कोई मतलब नहीं है, उल्टा आपकी इफिशियंसी वो खराब करेगा। तो इसीलिए जब आपको वो वैल्यू गिवन रहती है तो FYM में हम उसको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि FYM इज डायरेक्टली गोइंग टू इंपैक्ट योर इफिशियंसी। ये दिक्सता का सवाल था और ये क्लियर हो गया। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में शो की थी अर्निश, टेलीग्राम की लिंक आपको स्टार्टिंग में शो की थी, आपने देखा होगा। ठीक है, सो विद दैट गाइस मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, ख्याल रखिए सब लोग, और जब भी मिलेंगे फिर उतने ही प्यार से मिलेंगे और उतने ही जोश के साथ एनवायरमेंट के क्वेश्चन करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और सौम्या का जो पॉइंट है सर, वीकली एक आप लो, तो अभी तो आपको देखो संडे को आप सब लोग को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो फिर से मैं बता देता हूं, संडे गाइस आपके आपके 2 to 4 PM वाला जो है सर्विस रिजर्वायर वाला क्लास है। तो जो लोग YouTube पे मेरी क्लास किए हैं उन लोग बिल्कुल ही अटेंड कीजिए, क्योंकि ये आपका पार्ट मैंने YouTube पे नहीं करवाया था और मैंने बोला था स्पेशल क्लास में लूंगा मैं आपको। फ्री क्लास है अनअकैडमी पे 2 to 4 PM। आप अभी भी प्रोफाइल पे जाके उस वाले पार्ट को आप इनरोल कर सकते हो, उस वाले पार्ट को। जिनको लिंक नहीं मिल रहा है आप में से फेसबुक या इंस्टा पे पूछ सकते हो। वैसे मैं आपको सेकंड को, आई थिंक ये 2 अगस्त को है, 2 अगस्त को मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, लेकिन अगर आपको पहले से उसको लॉग इन करके रखना है रेडी, तो आप मेरे से लिंक मांग लीजिएगा। ठीक है, सो विद दैट गाइस गुड नाइट। साईं आपका एल्किनिटी वाला पार्ट कौन सा पार्ट था भैया बताइए, कौन सा एल्किनिटी वाला पार्ट था? ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे क्या? ये वाला क्वेश्चन आप चाह रहे थे? यही क्वेश्चन प्रॉब्लम थी साईं? एक मिनट बस साईं का डाउट देख लेता हूं बच्चों, फिर उसके बाद आपके सेशन एंड कर दूंगा मैं। यही वाला पार्ट था साईं? ठीक है, इस वाले पार्ट में देखो साईं, आपको जो यहां गिवन है कि ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट वाला पार्ट डायरेक्टली क्या शो कर रहा है, मोल पर लीटर में। मतलब ये वाले वैल्यू को मोल पर लीटर में रखो, यहाँ पे आपको डायरेक्टली गिवन है, इसलिए मैंने डायरेक्टली वैल्यू भी ले लिया है, काम चल जाएगा। ये 61 भी लेने की जरूरत नहीं है। सो 2 इंटू 10⁻³ आपको डायरेक्टली यहाँ पुट कर दिया, 3.04 इंटू 10⁻³ आपने डायरेक्टली यहाँ पुट कर दिया। ये दोनों पार्ट को नेग्लेक्ट कर दो, इन दोनों पार्ट को यहाँ डायरेक्टली पुट किया। 50 से मल्टीप्लाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वाला पार्ट आपका इक्विवेलेंट पर लीटर में है, बट आपका आंसर आपको क्या पूछ रहा है, मिलीग्राम पर लीटर एज calcium carbonate, and that is the reason I have multiplied with 50, because you know that equivalent mass of calcium carbonate is nothing but 50 gram, and that is the reason I have multiplied. ये सेम कंसेप्ट मैंने आपको एल्कलिटी में, हार्डनेस में कई बार बताया है। क्लियर है? OH और H- को नेग्लेक्ट करने बोला है, यहां देखिए लिखा हुआ है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- एंड H+ आर नेग्लेक्टेड। क्लियर है साईं? क्लियर है साईं? चलिए, अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग मैंने बता दिया है। 2 अगस्त को टॉपिक है सर्विस रिजर्वायर, 2 to 4 PM। कंसेप्ट समझेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, पूरा का पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये सर्विस रिजर्वायर और हार्डी क्रॉस मेथड दोनों पार्ट आपको मैंने यूट्यूब पे नहीं करवाया था, तो वो चीजें मैं आपको वहां पे करवा दूंगा। आप सब लोग उस दिन बिल्कुल ध्यान से आइए, और जो भी आपके दोस्त जो यूट्यूब पे देखे थे वीडियो, उनको भी आप शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, सो विद दैट गाइस गुड नाइट। साईं आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। गुड नाइट, मिलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।